टेक प्रॉफिट 5 दिन में करना होता पूरा? 5 दिन से पहले नहीं हो सकता। एक दिन बना लो पूरे। हाँ फिर नहीं एक दिन में नहीं बना सकते। 750। ओके 105 है टेक प्रॉफिट। यहाँ पे तो 119 लिखा है। 105 ओके आप कंप्यूटर में डाल लो यार। ईमेल इज डिफरेंट। गो टू योर कंप्यूटर डू टेक प्रॉफिट। All right, we are live here. Things are good. All right, let's see out. एक माइक्रो में $119 Very good. Good. $20, मैंने ES में किया और मैंने ऑन पॉइंट के लिए अपने जान वो $2.5 एमएस में तो $25 ये भी ये जो ना हम इस बार की हम चेंज नहीं करना। हाँ select your instrument properly। वो check ना check मैं मैंने एक एग्जांपल दिया था। एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ था तो अगर आदमी ने बोला घोड़े की कितनी टांगें हैं क्या उससे चारों काउंट करें अच्छा देखो बोल दीजिए वो नहीं अब मैंने एमईएस जो है ना वैसे ही इसको करके ना यस करके अब पूरे रिकॉर्ड कर दिया। हाँ एमईएस में कर रहा Welcome, जी. I have a question. Yes. We have a live account in Legends. So I've got about $500. Okay. So I wanted to know, it's been, I think I've had it for over 5 days. So now what is my max I can make now? 450. Oh, it's just, Every day 450 से आगे नहीं जा सकते. shoot. I thought once you came No. 7 days or 5 No. days. आप वो ये कह रहे हैं कि 7 दिन से पहले नहीं बना. 7 दिन उन्होंने आपको देखना है, मॉनिटर करना है कि पर्सन आता है, ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस लगाता है, तो 7 दिन से पहले. जो कंपनियां इधर इजी है वो उधर मुश्किल है. ये कंपनी दोनों बैलेंस है, ये भी ठीक रखती है, पीए भी, तो इसमें वो बैलेंस है. तो अगर आपने 500 बना दिया, पीछे 1000 रह गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 450 से ऊपर मैक्सिमम. ठीक है, कोई बात नहीं. सेम डे अगर आपने लेट्स से 200 किया, फिर आप 650 बना सकते हैं, क्योंकि आपने जो अपर लिमिट है वो 450 है. नो प्रॉब्लम. हाँ जी, दोनों अलग-अलग. पहले एक में ट्रेड डाल लें, फिर अगर अपॉर्चुनिटी नजर आए दूसरे में कर लें. बिल्कुल, नो प्रॉब्लम.
कौन सी स्पेशल ट्रेड आप लोग ले रहे हैं 9:30? 9:30 वो देखना होता है बेस और बेस एंड बेस वाली कि अगर तुम मिड से ऊपर खुली है, देखिए नाइट हाई नाइट लो है ना, तो अगर बेस डाउन है तो चांसेस आर कि उसने नीचे पहले जाना है, चांसेस आर तो नाइट सेशन लो को टच करना। अगर बेस ऊपर है तो चांसेस आर कि उसने ऊपर जाना। तो ये लेकिन इसका एक रूल ये है कि मेक श्योर कि बेस के करीब खुले, पिवट पॉइंट से ये ना हो कि वो खुल ही रही हो नाइट सेशन लो पर, तो फिर मैटर नहीं है। तो ये अगर इट हैज टू मेक अ रेट फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। Good morning, Ji. So, hopefully today is more calmer. Huh. Raining and roads were kind of messed up. I opened the bullocks, but I couldn't make a connection with. हाँ, नहीं आपने टीम से चैट करनी है ना, ताकि वो उसका सारे एग्रीमेंट साइन करें, सारा कुछ करके दें ना, सुपर एरियाज की टीम पे जाए ना। हाँ, नो प्रॉब्लम। सर वो जो बेस डाउन का आप डाले हैं मार्केट पहले नीचे वैल्यू नाइट सेशन को पहले पॉसिबिलिटी है कि उसको टेस्ट करें। अभी वैल्यू एरिया के अंदर मार्केट खुली है। It's going towards that. Okay. Audio is okay, good, everything looks good. Going towards it. लगा देते हैं। नीचे ही हो गया अगर 9:30 तक भी हो जाता। हाँ 9:30 इससे नीचे है तो बेस नीचे है। काफी टारगेट है भाई। न्यूजीलैंड सेकंड सेमीफाइनल जो भी डिसाइड करेगा, फिर इंडिया इसके साथ जो है ना, न्यूजीलैंड के बहुत चांसेस। यस, साउथ अफ्रीका बस उनको ना सेमीफाइनल की चिप ट्रॉफी दे देनी चाहिए। okay. तुम बस सेमीफाइनल में आओ, हम समझेंगे फाइनल ही है। Alright, let's Alright, let me take a look at go-to so I can bridge you guys. Can you do it after 2 hours? Earlier is good, 7 is good. 2 hours earlier than that. Yeah. No, madam, please. Okay, sir. अब आप जाएं, यहाँ नहीं है, superareas.com पे जाएं, नीचे बॉटम राइट पे चैट करनी शुरू करें। यहाँ लिखा होगा चैट, उनके होम पेज में जाइएगा, superareas.com के होम पेज पे, साइन इन वाले पे नहीं। नीचे राइट पे आपका नहीं साइन इन की ये चैट आ गई। हमसे कहें कि ये मेरा नाम है, ये मेरी ईमेल है,
मुझे बुल लॉक सेटअप कर दें, तो वो आपका अग्रीमेंट लॉग इन इंडेक्स से सभी कर देते हैं. All right, good morning everybody. Wednesday, March 5th, 9:03 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Today, base is down, pressure is up for both markets, ES and so it means we will be going low to high, meaning if every time we would make a support, we'll buy at expected low. Of course, we go with the trend. Let's look at Nasdaq. What yesterday was a crazy 1,400 point move within 12 hours. So Nasdaq started at 20,600, went down to 20,000, ended up at 20,765. Right now, the high has been 20,630, approximately 629.70, and low is 20,385. So the move of Nasdaq has been 245. Why do I do Nasdaq? Somebody asked me yesterday. It's a correlation between Nasdaq and ES, kind of gives me an idea how much the move has been. Now let's look at ES, 58.45 to 58.70. So 58.45 minus 57.80. So about 65 move. So if we look at 245 divided by 65, so same, so about 4 to 7 point difference. So we have a big difference in that too. 58, right now price is opening 57.80. So it's very close to night session low already. So, and Nasdaq 385 is below your S1. So it's opening at very close to night session low, because at 9:30 in the night sessions we'll get okay. Price is very close to right now S2. Nasdaq is very close to S2. आज फिर सर अभी तो खुल नहीं अभी आपने एरियाज रिफ्रेश करें, मेरी S2 की तरफ है. अभी वैल्यू एरिया के बॉटम एक्सपेक्टेड लो तक जा सकती है ये, क्योंकि इसने अगर फिल किया वैल्यू एरिया तो वैल्यू एरिया आपका एक्सपेक्टेड लो के अंदर खड़ा है, राइट? क्या चीज सर ये आप S2 ये है ना, मैं नैस्डैक नहीं बोल रहा, ES बोल रहा हूँ.
वो तो लग गया, मैंने कर भी दिया। तो बस ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो तो हो गया। ठीक है ठीक है। मीनिंग ESS2 इज डन, ऐसे लगा के वापस आ गया तो देयर यू गो, डन डन डन। डन है। अब मैं वेट कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड लो का ES का, क्योंकि वैल्यू एरिया भी वहां खड़ा है, एक्सपेक्टेड लो भी वहां खड़ा है, तो लो टू हाई जाना है तो एक्सपेक्टेड लो को आने में सर अराउंड 57 56 ये वैल्यू एरिया बनेगा। S2 डन हो गया आपका, S2 इज डन। आज जो है मिस हो गया मेरे से, मैं बातें करता हूँ। रिदमिक निंजा नहीं, वो ट्रेडोवेट दोनों दोनों निंजा ही हैं, लेकिन उसकी रिदमिक है और एपेक्स की तरह उसका रिदमिक पे चलता है, ट्रेडोवेट पे नहीं चलता। हाँ हाँ जी, लेकिन ये इसमें नहीं है, बुलनॉक्स में आप साथ नहीं देख सकते रिदमिक पे क्या हो रहा है। तो अगर आपका क्रैश होता है निंजा तो आर ट्रेडर की ऐप बाद में खुलती है, that's how it goes. So it's coming in, getting into your S2 one more time. 60-minute has a higher low, so that's a chance that price should go back up. Finally, we have a first higher low on a 60-minute chart. क्योंकि अगर आप देखें 60 मिनट को, पिछले 5 दिनों से उसने लोअर लो ही बनाई है, कोई आज हमें पहला हायर लो नजर आना शुरू हो गया। तो जो हमारी स्ट्रिंग रिट्रेस एक्सटेंशन की थ्योरी है, उस हिसाब से अब यहां से चीजें वापस ऊपर जानी चाहिए। 240 पे अभी नहीं आया आपका लोअर हायर लो, लेकिन 60 मिनट पे एटलीस्ट नजर आना शुरू हो गया। ईद का चांद आ रहा है तो ईद आ जाएगी अब। तो दिस इज द फर्स्ट साइन द मार्केट ट्रेंड इज, लेकिन अगर ये तोड़ गया 42 को, फिर आपका हायर लो खत्म हो जाएगा। So I need a black candle to the upside in order to make my अभी 1510 में हायर लो लगा है ना, तो ये आपको दिखा रहा है कि अभी मैं नीचे नहीं जा रहा। तो देखते हैं ये ब्लैक कैंडल कितनी स्ट्रांग होती है। So swing, retrace, no extension, मेरे higher low, let's see if it should go back up. I still think what is strong is expected low. Value area वहां खड़ा है, 70% का जो रूल है, meaning it should, value area is standing right there. साढ़े 8 पॉइंट हो गए, कोई ब्लैक कैंडल नहीं आई। सर नहीं 8.5 कहाँ पर? 8 हो नहीं 30-20 में तो आ गई है, सिर्फ 15-10 में 5 के बाद आएगी नहीं। इधर आ गई। ये भी है ना, ये तो नहीं है। ये ये ब्लैक कैंडल आ गई आपकी 1510 में टू द अपसाइड। ये आपको दिया उसने एक टिक, दो टिक्स तो आए अभी तक। एक पॉइंट होता है जनरली,
let's see if it breaks 57.87.50. तीन टिक और एक टिक और दे दे तो हमारा 3 टिक दिए 37.50 तक। एक टिक और हो जाएगा आपका 4 पॉइंट हो जाएंगे, पूरा पॉइंट आ जाएगा। डन हो गया जी। SRES 1510 में फिनिश हो गया, बल्कि ज्यादा ही मिल गया आपको। तो 1510 में मेरी क्या थी, वो चली गई जी मार्केट, ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड ले गया जी। So we took the 57.82.25, added 4.75, black candle to the upside, and is 30-20 पे बनेगी लगता है, क्योंकि वो नहीं पहले अभी 30-20 पे जब तक हायर लो नहीं आएगा वो वाला मेरा ट्रेड नहीं जा रहा। अभी तो फिबोनाची बॉक्सेस के अंदर है, अभी रेड बॉक्स के अंदर है, फिब के अंदर। थर्टी 20 में ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड चाहिए मुझे, लेकिन आपका ये वाला SRES वाला ट्रेड ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट देके गया इस वक्त। गुड मॉर्निंग जी। So again, we'll quickly get up and do our ritual. I know if anybody's in the trade, it's not mandatory, just for your mind to start. All right, so let's do a quick one. It's back to S1. All right, I bear witness to myself that today I will always check the news. I will always place my stop loss. I will follow my strategy and not trade randomly. I will treat today as my first trading day. I will stay disciplined. And I will do what I see, not what I think. There you go. Have a seat, and congratulations and best of luck. Hopefully you guys अपने आप से प्लेज किया है, किसी से और से नहीं। नहीं सुबह मैं असेंबली करवाता हूँ ना, असेंबली कराता हूँ। ठीक है, S2 से बाउंस हुई, S1 को रेजिस्टेंट लिया। आज लगता है मार्केट स्मूथ चलनी चाहिए। नहीं आहिस्ता, not everybody is trading every day, it's fine, no problem. मिडबैंड भी लो, ब्लैक कैंडल की भी वेट करो। Yeah, good thing. We're gonna wait at 8:15. News is done, but non-farm employment change is red. So now we are gonna watch out at 9:45 to 10 o'clock, which way. And anybody trading crude oil will worry then. So S1 done, S2 done, everything is good to go. हाँ नहीं कौन से किससे कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं एपेक्स है, लेजेंड्स है, बुलनॉक्स है। ओके दोबारा ट्राई करें, अभी हो जाएगा। ट्रेडर में लॉगिन करते हैं, ऐसे रिटर्न में भी लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ जी, एक दफा आर ट्रेडर के थ्रू। ये बंदे ने तो कुछ लिया नहीं, क्या किया उसने?
ओके, तो आपका अकाउंट एक्टिव है? बुलनॉक्स पे लॉगिन करें जरा, देखें कि वेबसाइट। So right now my next order is sitting at 57.58. That's where I will be buying from. 57.58. Value area and expected low in the magic band. Every single thing is lining there to go long. 57.58 is my magic number right now, or 57.57 is okay too. So anywhere, so value area bottom, and because there are multi-support there. So you have your expected low there, you have your value area there, you have your magic bands there. So 57.57 should be a good support. By the way, the mid-band trade worked now, coming down higher high. लंबा ट्रेल करें, दो देखें, ऑलरेडी उसने आपको दे दिया $100. तो this mid-band trade is done already. Price came from higher high, both are green. So and the value area top would be 58.27. We'll worry about that when we get there. NQS1 is valid. Don't do S1 Nasdaq, man. It is too darn fast these days. Let me switch to, even though it's valid, but go for it. Nasdaq, go for expected low. It's moving too volatile. Especially last 10 days, it just goes directly to expected low. So $30.20 mid-band is being tested right now after a 21-point swing. $30.20 mid-band has worked fine. Give you a point almost. सर एक सेकंड, आपका अगर नीचे जाना है ना हमने तो नहीं हाँ, हायर हाई के बाद हायर लो लगा ना मिड बैंड पे, तो अब भी इसको ऊपर ही जाना चाहिए थ्योरेटिकली। नहीं बाय नहीं बनेगा, बाय नहीं, अगर बाय था तो मिड बैंड था, अगर हाँ बस दैट्स इट। क्योंकि मैं वो रिवर्सल में मैं लगाता हूँ कि अगर ट्रेंड जहां चेंज होगा, क्योंकि ट्रेंड होता है हायर लो फर्स्ट लोअर हाई, दैट्स माय ट्रेंड टुवर्ड्स के नीचे। जिस तरह नीचे गिरा था, लोअर लो, पहला हायर लो लग गया था 1510 में, वो पहले ही हायर लो ने आपको कितने पॉइंट दिए? 17 पॉइंट दिए हैं। वो वहां से अब किसी ने 2 लिए, किसी ने 3 लिए। मैंने कल रात वीडियो लगाई थी, ट्रेल करें। हुआ ये कि मैंने ट्रेड डाला, वो पहले ही आप पहले तो वो 112 दिखा के उसने 0 पे कर दिया ना, मुझे अब उसमें से परवाह नहीं है। वो उठा के उसने मुझे दे दिया $462 लाइव अकाउंट में। और फिर क्योंकि होता ये था, क्योंकि मेरे से कल किसी डिस्कशन हो रही थी, आप 50 ले रहे हैं, एक ही स्टॉप लॉस सारा ले जाता है, राइट? तो ट्रेलिंग की आदत बनाएं कि होता ये कि उस ट्रेड में 0 पे निकल जाएंगे ना, वर्स्ट कम, राइट? लेकिन अगर वो ट्रेड लंबा चला गया तो अब आपके पास क्वेश्चन है ना लूज करने के लिए,
हुआ ये कि आपने सिर्फ 100 देखे या 50 देखे, पकड़ लिया, बंद कर लिया। हाँ नहीं नहीं, जैसे ही 112 हो वैसे ही स्टॉप लॉस आपका 0 पे आ जाना चाहिए। ये 112 ना हो, 100 कर लें 100, या तो फिर आप, क्योंकि खाली 50 लेते रहेंगे ना तो वो फिर ये जो आप कर रहे हैं बाइंग और सेलिंग का करना, ये अगेंस्ट जो जब ट्रेंड चेंज होगा तो उसको, हाँ जब ब्लैक कैंडल आएगी, ये इस हाँ, जो SRES का फॉर्मूला है ना, हाँ, वो ब्लैक कैंडल के साथ चलता है, सही सही, वो उसका ट्रेंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो ट्रेंड का ट्रेड है वो मिड बैंड का है। तो प्लीज मिक्स ना कीजिएगा ये दोनों ट्रेड। सही सही, एरिया ट्रेड आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं, ठीक है। मिड बैंड का ट्रेड विद ट्रेंड जाते हैं, ठीक है। तीसरा ट्रेड आता है SRES का, स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन का। वो कहाँ आता है? लोअर लो आया, फिर हायर लो, उसके बाद क्या आता है आपका, सॉरी, लोअर हाई, लोअर लो। पहला ही हायर लो आ जाए ना तो वो आपको एक बता देता है कि अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा ये तो हो गया बाइंग के लिए, लो से आ रहा है फिर LH, हाँ एग्जैक्टली। तो हायर हाई से कैसे आएगा? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। तो प्लीज तीनों का 3 डिफरेंट ट्रेड हैं। मिड बैंड का ट्रेड ग्रीन ग्रीन बाइंग फ्रॉम द मिड लाइन, ये मिड बैंड का ट्रेड। एरिया ट्रेड एवरीथिंग इज ग्रीन, यू आर सेलिंग, क्योंकि उसका काउंटर ट्रेड है। और तीसरा ट्रेड SRES वाला, इसमें आपने सेटअप्स देखने हैं। मैंने कल बैठा रात को, सुबह 3 बज गए क्योंकि रोजा भी होता है, सहरी पे क्रूड ऑयल पे देखा। मैंने 15 इमेजेस निकाले गोल्ड में 1510 में। यार 4 टिक्स तो दे ही जाता है आज भी, 4 टिक्स ये SRES वाला। और अगर आप ये 1510 पे करते रहे उसमें लॉस कम है। देखिए आपका लॉस है सिर्फ 4.75, 50। हाँ हाँ जी, देखिए मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 19 टिक्स, क्योंकि ब्लैक कैंडल कब आ रही है अगली, 19 टिक्स के बाद ही आएगी ना। तो मेरा 19 टिक्स टाइम्स $12.50 मेरा 237 का एक है। लेकिन आपके एटलीस्ट आपको 4 टिक्स दे रही है। गोल्ड में देखें, क्रूड ऑयल में देखें, जहां ये वाला सेटअप नजर आ गया ना, तो ये SRE है, उसमें बैकग्राउंड नहीं मैं आपको देखना। तो राइट, सो तो और प्लीज सारों को मिक्स ना कीजिएगा, सारे ट्रेडों, क्योंकि होता ही है कि उधर आप बैकग्राउंड देखना शुरू कर देंगे ब्लैक कैंडल के साथ, तो ट्रेड डिफरेंट है ये, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं। 30-20 वाले में उसको बड़ी मूवमेंट चाहिए, राइट। सो अभी ये 1510 का ट्रेड करवाया मैंने आपको, जैसे ही मार्केट खुली है। हाँ कोई बात नहीं, बहुत सेटअप्स हैं। अभी ये जो था 15, ये जो अब आ रही है ये रिट्रेस है सर, ये स्विंग आई है, ये तो 30-20 पे ये रिट्रेस ले रहा है। अब फिबोनाची के अंदर जाएगा ग्रीन तक, तो देखें, लेट्स सी व्हिच वे इट गोस। Sorry, I will switch to English. My apologies. So what I was saying are, there are 3 types of trade. Please, for God's sake, don't mix them. Whenever you're doing an area trade, you're going against the trend. So when the price will go into S3, everything will be green. So you are gonna everything will be red, and then you will buy, and you're like, this is wrong. Everything is red. Why am I buying? So that's a counter trade. In area trade is support and resistance. We don't care about background color. Number 2 is a mid-band trade. Mid-band trade, 1510 green, 3020 green, and then you're going with the trend. And the third trade is wherever the trend is about to SRES. So swing retrace extension. Good morning, guys. Sorry. Good morning. Joseph, good morning.
Ji, good morning, Hikesh. Vikas, good morning. Tamil Bhai, Ash, Harleen, good morning. Sunil ji, good morning. Saurabh, Clifford ji, good morning. Sunil, good morning. Alpa ji, Jagdeep ji, good morning. Ji, Sukh ji, good morning. Majid, Anil, good morning. Gaurav, Rahman bhai, Ranjit ji, good morning. Jamal bhai, walaikum salam. Sayyid Ali ji, Manpreet ji, good morning. Rizwan. Everybody, good morning. Ji, quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training for not attended as trading advice. They are just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions, and don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, Russell especially, keep eye on Russell 2000. Our base is down, pressure is up, S2 done from S2. Actually, S1 was done very nicely previously while we were sitting here. From 58, it bounced back up to 17 points from 58. And now from 80 area, done for the day, from 80 area, it's already bounced back up from S2, 83 to 81 was our 83 to 81 was our, it was 80, so not 81, it's fixed, guys. It's 80, done, it's fixed. And our Nasdaq is at S1. Nasdaq is not going down. If you look at the Nasdaq, it's not going down. And it's just held by our S1 area, S1 very nicely. Our expected high for the day for S&P is 58.90 to 59. And if you see gap in between expected and extreme low, that's huge gap. Same as yesterday because of the uncertainty in the market, and Euro, Germany just bail out their all bad debts. That's why if you look at the FDAX is crazy, banana, big push. And it's supposed to take these S&P, Nasdaq, Dow, Russell 2000 to the upside. News today we have ISM service PMI and final service PMI. And the factory orders are coming at 10 o'clock. 9:45 we have service PMI final and ISM service PMI, green to go up, red to go down. And then we have Russell S&P 500 low is 57.60 to 57.50. Nasdaq our high is 20,900 to 950, and our low is 140 to 20,140, 20,090. So today again, guys, we have to be very careful. Tomorrow our very important day, and day after tomorrow we have a very important day. Today, if you see, we have advanced our automatic data. That is not good. That is not good. Way lower than the previous means. If we see Friday, our non-farm data is lower, red. I don't think so. Further push down, but it will fuel the Trump decision. Then we'll go by area to area. And today, if you're done from S2, just call for the day. Green midband to go up and red midband to go down. Dow, Nasdaq and S&P are sync. Dow and S&P are sync. Russell and Nasdaq are sync today. If you see Russell very close to S2 area, actually at S2 area,
and still pushing down. And currencies, if you look at the British pound, crazy push to the upside. British pound is at our expected high, break even yesterday, and it's a very strong push to the upside. Euro, because euro is getting together against the US. And US dollar is getting weak. Even though Canadian market, if you look at the Canadian dollar, is also strong and very close to our expected high for the day. Euro is banana right now. Euro very strong, pushing up, and euro getting very close to our extreme high for the day. Crude oil base is down, pressure is down, already hit our expected low for the day. Crude oil, I'm expecting further push to the downside. Crude oil should go further down, but already hit our expected low for the day. When I came, it was at around 67, 67 plus, 67.20, 67, and just 1.5 hour came down, and very strong push to the downside. FDAX already hit our expected high for the day, and again, FDAX is going up because of the bailout package from Germany, and it took everything to the upside. Gold is in doldrum. Gold right now at PP area, fill up the value area. It was whole night. It was in the value area. Get out from the value area. Now getting back in the value area, and not S1 but very close to S1, and bounce back up. Copper very close to our expected high for the day. Copper base is up, pressure is up, and silver same thing, copy as a mirror copy of the gold. Came down from R2 above value area and above PP area. Natural gas was up today, hit our expected high for the day after 8 o'clock. It went up, hit, and shoot to the downside, and now getting very close to our expected low for the day. So nicely, natural gas, big push to the upside, hit our expected high, and right now at PP and very close to the expected low for the day. British pound at R1, British pound went up $9,705. And right now at R1, expected high is expected for the Bitcoin. And Ethereum is same as the Bitcoin, but not much. 200, almost $80, $79.50 push to the upside at green midband right now. Friday is very, very important, guys. Friday is very, very important. If you look at the Russell 2000, very close to our expected low for the day. So Russell 2000 is very close to expected low, and S&P is bouncing back up, but Dow is bouncing back up, and S&P and Nasdaq today synced. So two younger ones are synced today, and trust me, it might take S&P and Dow, but Dow and S&P are mother and the older daughter. So we have to be very careful here. If Russell 2000 is very close to our expected low, if Russell 2000 hit and Nasdaq hit S2 area, we might see a push to the upside, or these two will take those convince and take to the downside. You see S&P again, a little bit retracement to the downside, but Dow is not retracing back anywhere. Hit low of the value area, hit S2 area Dow, and right now bouncing back up. Please guys take the areas and stay from low to go up. Low to go up would be a good and nice strategy today. And yeah, just keep the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be at it. Why is this euro going up so much? Euro and British, they're combined together. They're combined together and collecting, and then they want to show this world we are doing good against the US, and that's why US dollar is going down. If you see DX is going down, and that's why all these three, and not only three, every currency is going up. Okay, thank you. You're welcome. All right, between S1 and S2. You're welcome, Sukhji.
जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ 15 ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੀਏ ਪਰ ਸੈਟ ਕਰੀਏ सर हर ट्रेड ਦਾ स्टॉप लॉस देखो 1500 तो नहीं ना जाए ना, अगर पीए तो वो तो माइक्रो ही करना चाहिए। ਪੀਐਮ ਦੂਜਾ ये देखो ਜਿਹੜਾ ਹੈ SRES ਵਾਲਾ ਸਵਿੰਗ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਟਿਕਸ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਬਾਕੀ 20 ਟਿਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਟਿਕ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ 20 ਟਿਕ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਰੂਮ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਕਰਦੇ ਆ 12 ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। नहीं डिपेंड करता है कि ट्रेड केड़ा ले रहे हो। देखो मिड बैंड द ट्रेड एटलीस्ट 20 टिक्स नीड। यस ਤੇ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਵੀ 20 यस ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ 20 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ यस यस ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 20 ticks is generally both the price is okay there. ਫਿਨੋਸਿਸ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ Yes yes look how fast that moved. स्क्रीन पे करा दो। मैं लगा didn't touch mid band so quite. जी सर मेरा ग्राफ सही नहीं आ रहा पता ही नहीं चल रहा मुझे। ये आपको डैनियल फिक्स कर देंगे बिकॉज आपकी ग्राफ्स की एक्सेस उनके पास है।
20,330. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास. किसने? Oh, very good. So he does Nasdaq completely differently. Let's see if S1 becomes the support first before going up. Will it cover the value area? That's the question. Until I have a setup, I'm not trading, especially not area trade. Yes, just telling you there's no area trade. It has to go to R1, then I will sell. So please don't take any area trade. R1 would be your first level of resistance. So before R1, we are 58.42 is our R1. That's where we will be thinking of shorting. Number for R1 is वैल्यू एरिया का टॉप कहाँ है जी? बिल्कुल आपको मिल सकती है 27 के पास. 27 ये आ रहा है 20 ओवरलैप हुआ है 22, 23, 25 के पास 24. Right now, let's see if S1 becomes your support. नहीं अभी तो रिट्रेसमेंट है वो जो 28 पॉइंट की है ना Fibonacci boxes are downward. There you go. Inside the Fibonacci boxes are there. No, not yet. Wants to go back down. Didn't take it up. It's a lower low से है, लेकिन should be okay. There's a divergence, bit of a. I did not take that mid-band trade because I took the Fibonacci trade on 30-20. नीचे नीचे जितना नीचे ग्रीन के अंदर से या रेड के अंदर से वहां से वो फिब का अगेन 4 ticks was my
So Fibonacci again is a completely different math. So there you go. Midman worked on that 1510 और 3020 पे भी चल गया दोनों. 3020 was a gap trade. Price has gone below. Now 3020 has a bit of a divergence. Strength is not going down. Let's see. Now we have a first higher low. Not yet. Let's see. Does it break 91? No, that is finished. So I'm looking for a sign to go up. Maybe there's a divergence trade here. हाँ जी, ग्राफ्स उनके वो ठीक है. Going back towards S2. So this mid-band should go back up. Higher high se aa raha hai. Yeah, perfect. Beautiful trade on the mid-band. Again, another mid-band even after divergence worked. So after every trade, give it a break. Don't take the next one. Like, calm down. Otherwise, it will, until the next setup. I'm waiting for the value area, honestly, on the ES. It's going to be 5824. Now, udhar, it should test it approximately. Because it's slightly close to pivots too. PP is there, sitting there. So 60 minutes का ग्राफ है. yeah. इसके नीचे लिखा हुआ है वैल्यू एरिया 60 minutes. दिशा वही हुआ हमारे को. कल भी मैंने यही बोला. क्लिक करो. इसको चेंज करके 60 करो. या फिर
ये 60 मिनट्स पे करा दो double divergence, so this is not gonna 60 क्लिक hold. तो भी आपके पास ही निकल जाएगा ये पिंक देख रहे हो येलो देख रहे हो दो ये वाले Now 30-minute I need a 30-20 I need a candle to the upside. All right, Nasdaq wants to go back down. न्यूज भी आने वाली है ना Yep. न्यूज चलो माड़ी आवे थले तो लेके जावे रोटी घड़ी जाए घड़ी नहीं मार्केट सामने अच्छी माड़ी नहीं I'm not going long until I have a candle, proper candle. This mid-band worked as well. So you have 10 o'clock news, guys. Is it 10? Or let me double check the news. सर जो है ना अगर सेशन उसके लिए हो रहा है कि जो ड्यूज हैं वो कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आप उसको रीड करें Chapter 1. पूरा लेक्चर ही न्यूज पे वीडियो का चैप्टर 1 ही न्यूज सर पे बताया हुआ है कि अगर एवरीथिंग CPI होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा साथ पीडीएफ दे दी आपको स्टडी के अंदर आपको पीडीएफ बता दी गई कि हर न्यूज के साथ क्या होता है अच्छा ग्रीन टू गो अप रेड टू गो डाउन वो हर हाँ आपके स्टडी गाइड में है हर गाइड हर 3 minutes guys be ready 3 minutes हर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੇ ਹੋ ਨਾ हाँ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ There you go, guys. We are heading to expected low now one more time because I think news is good or bad, but let's see. So value area is trying to fill. So expected low one more time, another record before 10 o'clock. We are heading there, back to back. Two minutes, 57 seconds, guys. Be ready. It could change anything, anytime. So now it's a gamble, 50%. Whether it will go in your direction or not, I don't know. But it's a gamble now. So it's heading towards expected low and the value area. Looks like it. Maybe 2 minutes, 34 seconds. कौन सी न्यूज़ आ रही है Sir, ISM, body red wali. ISM ISM is your news that does supply management to see tariffs related. So we are in expected low anyway, very soon. So I'm sitting at 56. 56, 50 to be exact, but let's see. I could be wrong. I mean, it doesn't have to go there, but so we are in the news of 1 minute, 44 seconds. So 5770, it went up.
1 minute 18 seconds. High impact train is coming, so be careful. So it's gonna. वन माइक्रो हाँ. मैंने भी $50 पे एक माइक्रो There you go. Let's see. 53 seconds. Factory orders, I think they're asking 1.7%. And ISM, let's see. Back into S2. Anytime now. 26 seconds. Six seconds. Whoa, whoa, whoa. Tum, tum. Done. To it up. To. There you go. Shut up. Shut up. Done. नीचे रहेगी. नीचे रह गया जी, मेरा ऑर्डर नहीं लगा. Done. Mid band done. So if you were green, you were lucky. There you go. That's all I can say. 55. कोई ग्रीन में था वैसे? आप ग्रीन में थे? लो जी, आप पास हो गया सब कुछ. देखें, ये गैम्बल था. हाँ, तो वो न्यूज के सामने आप क्या करेंगे? तो आप वो ले गए जी न्यूज को. ग्रीन है जी. अब सबके स्टॉप लॉस सेट कर रही है. अरे नीचे को बैठे थे, ऊपर ले गए. हाँ, नहीं ग्रीन न्यूज अच्छी आई है. न्यूज अच्छी आई तो वो ले गए ऊपर उसको. तो मैं एक्सपेक्टेड लो पे बैठा था, नहीं ऑर्डर पे. अभी भी वहीं ही बैठा हूँ. मेरा माय ऑर्डर इज आर एक्सपेक्टेड लो बिकॉज S1 इज डन, S2 इज डन, और R1 फॉर एरिया, और R1. ऑटो ट्रेडिंग की जैसे बुल्स हो गया, इसको काम करेगी बिकॉज $112 बिहाइंड रहता है. तो वो आपको ATM लगा के निकले 4 पॉइंट टिक्स, 8 टिक्स, बुल नॉक्स एंड एपेक्स. इसमें अगर ऐसे करते जैसे हम लोग ब्रेक इवन पे लाके उसको जीरो कर आगे ट्रेल ना हो. नहीं ट्रेल तो आपको नहीं जैसे बुल नॉक्स नहीं, बुल नॉक्स में फिर आप ट्रेल ना रखें. आप करें कि मैंने 8 टिक्स ली एंड I'm out. दैट्स इट. बोट लगाया तो 20 टिकल हाँ, और जो TP8 का उसमें ट्रेलिंग नहीं चलती ना एपेक्स में ना ट्रेड ट्रेडर्स में, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव मनी इन द मार्केट. I do use trailing, but let's say I have taken 10 trades and they are profitable, but in the market is $112 loss. Then 1 or 2 trades I will do fixed and then finish my what do you call it? All right, let's see which way it wants to go now. Nasdaq is now it's above S1. It did not go to, but congratulations who was long. Now market is हाँ बना ली उन्होंने. 44 पॉइंट गए ना, वो पास कर गए फौरन. ऐसी सिचुएशन में माइक्रोस अच्छे रहते हैं, पता नहीं किधर जाएंगे. आपने लॉन्ग किया? कितने निकले फिर तो? लेकिन ज्यादा मार्केट मूव हुई है. आपने क्लोज जल्दी कर दिया. आपने बस पैनिक हुए कि भाई इससे पैसे अच्छा अभी इसी वक्त. अच्छा, man, he managed to get 2,800 people in a month and a half on TikTok. You gotta go live at least an hour a day. So now market है, जाने दें जी, जिधर मर्जी जाए. अब तरह थोड़ा उस मैच देखिए अपनी अटेंशन को चार्ट से उठा के मैच की तरफ लेके आए.
कितने हो गए? 2 आउट ठीक खेल रहे हैं यार, 2 से 6 कर सकते हैं यार। क्लासन खेल रहा है, क्लासन। अच्छा मेरा तो ग्रास भी मैचअप नहीं हो रहा सर, उसको डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि मेरे साथ यही था। अभी मैंने निंजा रिस्टार्ट किया। लुक एट, अभी स्पीड देखें, लुक एट द स्पीड। मैंने ट्रेड डाला नेगेटिव आ गया। 1 mid band, 2 mid band, it keeps going up. But it was one of the best days to watch market yesterday. And like, you know, I didn't believe my eyes. It started at 2,600, went down to 20,000. That's 600. I'm like, all right, it's okay. Went to 20,765. Same day. So अभी market, yes, is still moving fast. 30-20 mid band worked, no problem. I can see. ऑर्डर डाला नेगेटिव दिख रहा है। नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा रहा था। वो क्लोज किया तो नेगेटिव था। स्टॉप लॉस के साथ चलो जी। स्टॉप लॉस के साथ मैं तो इसमें भी स्टॉप लॉस लगा के चल रहा स्टॉप लॉस हूँ। के साथ प्रॉफिट आया था 25 का। आप क्लोज करते हुए ना नीचे वाला रेट में पड़े एक बार एक नहीं वो बात नहीं, ऑलरेडी क्लोज हुआ। आपने टारगेट डाला हुआ था, टारगेट भी डाला हुआ था, वो भी किया था। तो आपने क्लोज किया, क्लोज वाला बटन दबा। हाँ, तो वो नीचे वाला रेट रहता है। डजंट मैटर, 25 का 20 दे देना, और वो तो माइनस में दिखाना है ना मेरे को। आपने जब तक क्लोज किया वो रेट नीचे आ चुका था, और उसने आपको स्टॉप लॉस सेट नहीं किया। हाँ, स्टॉप सेट नहीं। अगर वो आपके स्टॉप लॉस को तो 40 होता है। बहुत नहीं है, क्या वो चलेगा, पर चलना ही चाहिए ना। लोअर हाई हाई बावजूद भी चल रहा था, क्लोज के बावजूद। दोबारा देखना लोअर दूसरी बात ये है वॉलेटिलिटी कितना है। डाटा या ये बंद नहीं होना चाहिए। मेरी बात तो ये सुनो, आपका ये जो है ना कलेक्शन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ है। जैसे माइक्रो नैनो सेकंड डिले और एक मार्केट के अंदर बहुत सारा डाटा आता है तो चार्ट फ्रीज हो जाते हैं या डाटा आने में जाने में टाइम लग जाता है। एक बार होता है स्टॉप लॉस सेट नहीं करता। हाँ नीचे आगे करता इतनी है। तेज मार्केट जाती है कि आपका स्टॉप लॉस पीछे का पीछे रह जाता है। That's why they always, that's why they say जब भी मार्केट के अंदर जाओ डबल टॉप मारी केयरफुल डबल टॉप डबल टॉप आ जाएगा ये पूरा So let's see, when I get to R1, then we'll figure out. ऑर्डर क्लोज करो $4 FT अमाउंट $100 देगा तो क्लोज किया $4 इसलिए हम टेक प्रॉफिट को वहाँ पे मैं बैठी थी, इसमें टाइम लगता है। टेक प्रॉफिट में नीचे तो चलता है।
टेक प्रॉफिट नहीं जाना तो ये कवर नहीं चाहिए जल्दी काम ही हो जीसी देखिए क्या चल नहीं ट्रेडिंग कर रहे हो वीडियो गेम कर रहे हो मन तो कुछ भी नहीं कर रहे छोड़ ही नहीं है अब तो सर वीडियो गेम ही देखने वाली बात है डन कर दिया उन्हें चरस का नुकसान होगा नहीं 125 पे आ गई माइक्रो पर आया हूँ
Base down, chances comes. और अगर pressure up है तो long में और pressure down है तो short में. इनके more chances है कि price के नीचे should not go down. ज़्यादा pressure अपना उसका ये होना चाहिए और अगर बेस आता है तो नाइट सेशन हाई हो जाता है तो बेस आपकी नाइट सेशन बेस इक्वल आता है बेस आता है नाइट सेशन हाई हो जाता है और अगर बेस डाउन है तो नाइट सेशन You shouldn't be coming on the floor. Really, you shouldn't be coming on the floor at all. You shouldn't be coming on the floor at all. आपने नोट्स बनाए थे, आपको याद है? मैंने आप आए थे क्लास में। फर्स्ट डे वो तो वही वाली बात हो रही है क्यों नहीं जो आपने किए थे वो अब समझ नहीं आती, आप दोबारा वीडियो देखो। समझ में नहीं आती। आप ना उसको अपना निंजा बंद करो। आपके कंप्यूटर पे पावर ऑफ ट्रेडिंग लिखा हुआ है, वो पढ़ो पूरा। पूरी पीडीएफ भी है, वीडियो भी है। वीडियो देखो, हिंदी वाली देखो, अगर इंग्लिश वाली नहीं देखनी हिंदी वाली देखो। किधर आ गई दोबारा नीचे? नहीं, दोबारा S1 पे खड़ी है। 8 घंटे लगने हैं। 10 दे दें सारी डाल के। 10 hours to every way. वो तो देखो रोज। And I honestly, not a joke. When I first joined this institute, I've been trading for a long time, like stocks primarily. Futures was new. Before even I making into a business, I recorded his lectures and I used to just put them before going to bed. I don't care what I was listening, but it was just feeding me, sometime कल रात में मजे की ड्रीम, इतना चार्ट पढ़ के दिमाग खराब हुआ है। कल खांसी लग गई मुझे शाम को ना इफ्तारी के बाद। एंड मुझे माइंड क्या कह रहा है, लोअर हाई से खांसी लगी है। I swear to God, it was so messed up, and because I'm in my own zone, right? And I'm trying to figure out खांसी कब लगी। तो माइंड कह रहा है लोअर हाई से लगी। So you watch these videos over and over and over and over and over. No, it's annoying. Sometimes every single thing it kind of becomes a curse. But the idea is that those videos will inject into your brain like value area. Something I learned after 4 years. There is something called initiating price. I didn't know about that, and then I started looking into it. But so those are I especially video number 1 hour 30 seconds will give you the swing retraced extension, and he clearly draws higher highs, higher lows, higher highs, higher low, and then he will ask you the question, do you know when it will make the lower high? And he will say black candle, right? So those are the खोल के पी जाएं ये वीडियोस, राइट? तो मैच लगा के ना वो लगा लेता हूँ। नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे देखते रहो, कान में लगा दो उसको। So now it's coming down again to hit everybody's stop losses. So now I'm still waiting for expected low because that is not done yet.
30-20 has a bit of a divergence. Let's see. So every time there's a setup, I will point it out for you. नहीं sir, divergence है. Look at strength is down. Strength is not going down. So you will have a black candle, and it will make it. But strength is now going to go down. Right now it's going. Because the moment you will have a black candle, you will have a white line or divergence. That means that mid-band becomes riskier. All I need is in order to price to go up, first higher low. Waiting for first higher low. So let's see if 15-10 mid-band works. नहीं अभी lower low है ना? Low पहले बनाएगा LH. LH के बाद HL बन गया ना? ये वहाँ से black candle 100%. So I'm waiting for my first higher low, 15-10, to see if the price wants to go up yet. पहले 15 में बनेगी ना, फिर बाद में जाके 30-20. नहीं 15-10. 15-10 is better in terms of giving you those 4 ticks. There you go. It's a mid-band trade, perfect mid-band trade on 15-10. So it made your lower high. So let's see if it makes a higher low now. Oh, black candle, but that 15-10 mid-band हो गया, खत्म हो गया, done हो गया. Still needs to make a higher low first. You see this, how beautiful mid-band, lower low price came? Okay, that again, nothing. So even if you took that mid-band, you're done $200. इतना आसान है, ये mid-band. Both charts are red, price is coming from lower low, sell at mid-band. Price is coming at lower low, sell at mid-band. Now we are back in S2. Incredible. So let's see which. Now we have a divergence. Still didn't make a 15-10. Let's see if it makes a higher low first. I have to see. But there's a bit of a divergence here. That mid-band worked as well. अब यहाँ double divergence बनेगी जी. Oh, not yet. Back into S2. Maybe it wants to go and test expected low again. So we are ready. We're back to night session low. So I'm still waiting at my expected low. 5757 is my number. No, 5757. One good mid-band trailing would recover everything. Another mid-band, ji. Oh man, incredible. That mid-band worked as well. Sir, 15-10 ka hai. 15-10 ka chal gaya. It shows you $100. So far, it hasn't failed yet. 7.75. Now, down 30-20 mid-band is working. Testing. Let's see. Abhi tak, let's see if it'll return from a Fibonacci yet or not. Sare mid-band. Now it's testing the Fibonacci boxes. Let's see. I'm still waiting for my higher low on 30-20. Okay, 30 to 15-10 made a lower low. I mean higher high. So let's see if the Fibonacci ones are working. Because
top of the fibs. It actually gave you 2 points from fibs. 57.93 to 57.90 gave you 3 points. From upper from the red, and there you go. Fibonacci boxes worked as well. अब यहाँ हायर लो बनना शुरू हो गया 30-20 पे हायर लो आ गया अब यहाँ से देखेंगे कि पहला हायर लो लग गया so 5785 plus 8.5 no. 1510 पे हायर लो बन रहा है 5793.5 no problem still higher low let's see if it will retrace from fib box 5779 because Nasdaq is between S1 not yet S2 के अंदर है जी mid band worked again 1510 So Fibonacci worked again. Bottom of the green gave you 2 points. If you हाँ दो Fibonacci 30-20 के fib boxes काफी strong होते हैं वहाँ रुकती है मार्केट आके अपना एक दफा तो रुक जाती है तो आपने फोर्थ स्ट्रेटजी सर पूछी थी वो fib boxes हैं strong है Fibonacci box Still expected low. I'm waiting for my value. I think it wants to go touch 5757. But let's see. Never know. Need a black candle to the upside. Not yet. No black candle to the upside. Is Nasdaq done? No, still wants to go to 250.
That mid-band worked as well. $30.20 mid-band worked. Now we have a first higher low. There you go on 15.10. Will it go and break 5774? Let's see. But 15.10 has the first higher low. 15 से ऊपर कितने ऐड करने हैं? 4.75. वहां से ब्लैक कैंडल बनती है. So swing retrace extension in that method you have अभी तक तो black candle बनेगी फिर देखेंगे. So now 5776.75 plus 4.75 is your black candle. Let's see which way it wants to go first. So 5776.50 plus 4.75, 578.125. But still nothing yet. No black. If it makes a lower low, our setup is not there. हाँ जी हाँ जी. तो मुझे लगता है कि इसको पहले ये 5774 is a critical number right now. $577.550 plus 4.7. There you go, black candle, and you're done your trade. The first higher low was that your Q that I'm about to go up. और वो आपको उसने चार्ट हैं सर पहले रेडी होना होता है. पहले ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर लगा के रखे. आप जिस वक्त तक कैलकुलेट करेंगे वो सारा आपको ले भी जाएगा. So that was your next setup. So your entry should, the moment you see higher low, stop putting a stop order and then adjust them based on how far it goes up. So we are in S2 right now. Now it should go rocket, like rocket, at least 5788. लेकिन स्ट्रांग नहीं है, इतने बड़े नहीं है, वो छोटे हैं ना. But let's see. So you see how beautiful that SRE setup works? The moment you see a higher low after a lower high, your alert should be there. Hey, I need a black candle to the upside. Wait for those setups, you will not have a problem. So again, to explain this on the board. Anyway, ये वाली light बंद करेंगे? Sorry. हाँ, perfect. So, lower low, lower high. The first higher low is your sign that I'm about to change my direction, right? So if this is swing, this is retrace, there's no extension, so this becomes your swing. So if you entered here, you are laughing. So again, now the mid-band started to work. Higher highs, and man, it's just magical. But you just have to understand how to watch the charts. The moment, so you took it started to make sense, 10 mid to mid-band, and you can do this 23 hours a day, no problem. But you have to watch these patterns. If you don't have a pattern right here, that's not a cue to go long. I circle on my status, higher highs, and this is your pattern to go up.
then you have a mid-band. 1 and 2 mid-bands are done here. Back-to-back 3 trades. One good here, one good here. So far, I saw 2 points, at least a point though. Now 30-20 has a higher low. 30-20 has a higher low. So I need a black candle to the upside. So every time you take a trade, take a breath, and then not, if you have a winning trade, let's wait for the next setup. Mid-band भी 30-20 का चल गया, gap trade था. BBs never came down. Now it should, I think, shoot to the upside. Should. Because until 5783.50 plus 8.5. Yeah. मतलब 30-20 पे बनेगा ना, lower high बनाया है. So it should have a black candle to the upside and break S1. Let's see how many ticks it gives you after 92. That's what I'm concerned at. After 92, so far, there you go. Beautiful trade, beautiful trade. वहां से order लगा, निकल गया जी भाई. You guys have to fix, like, आपकी eyes को पता लग जाना चाहिए कि यहाँ से trade लगने वाला है. सर देखो थोड़े ना मैजिक तुसी ਇਹਦੇ 1510 ਦੇ ਨਾ ਇਹ मैजिक बैंड बंद कर दियो. सही हो जाएगा. So lower low, lower high, first higher low, and then you go 8.5. सर नहीं फेल होगा. नहीं हो रहा है ये तो काफी सक्सेस है. हाँ, क्योंकि आपको और उसके अंदर मिड बैंड आ जाए ना, वो भी नहीं फेल होंगे. 2.2 आ गया. हाँ देगा. और देखें फौरन ही मिड बैंड चल गया अगला, because became a higher high, lower higher low, and then mid band is working. So again we had a trade, and then again we had this mid band worked as well. And by the way, this mid band worked as well. This is within your stop loss limit of 8.5. So until you have an 8.5, you can still stay in the trade. So this mid band worked because again, the rule of the mid band of 1510 is you can hold your stop losses until 8.5. So don't put it too close there, right? So that's why I said 20 ticks, because 8.5 is good. 8.5 is good. 8.5 is good. 8.5 is good. All these mid bands are going in your favor. अब बहुत उसको 8.5 तो दें थोड़ा सा ब्लैक के. मतलब 20 पॉइंट मतलब क्या होता है? 10 पॉइंट मतलब नहीं 10 10 10 तो बहुत कम है. वो तो सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. 2.5 पॉइंट्स भी नहीं है. सर एफएक्स पे काम करते हैं. नहीं, सिर्फ एपेक्स. ओनली एपेक्स इन एफडेक्स, नथिंग एल्स. So wait for R1, guys. If you don't trade randomly, this mid band is beautiful, going up. So HL trade as long as also the mid band trade. Today market of VS is working 100% the way it's supposed to. 450 divided by 12.5. ये आप देखिए 36 पड़ेगा आपके को. 36 चलिए आपको. हाँ ये आपका. और उसके बाद यहाँ आगे पे लिखा हुआ है. हाँ ये साउथ अफ्रीका.
इसमें आप ये कर दो कि जैसे आप इतने दी आगे ना सारी एनर्जी सेमीफाइनल तक खत्म हो गई है। ये देखिए एक सिंगल मिड बैंड ट्रेल हुआ, वो कहाँ से कहाँ ले गया जी, एटलीस्ट 5 पॉइंट तो दे गया आपको। वो ले गया जी, R1 पे दोबारा ले गया। अगर अगर उसको ज्यादा आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेनिंग करते हैं मैंने इसका जो करा ये आप ट्रेनिंग करने का फिर उसमें बड़ी जल्दी कर सकते हैं कि जहाँ लगा आप सेव कर दिया जाए तो उसको बाद आप मैनुअली ट्रेन कर सकते हैं। ये मैं सच सबसे पहले होती है ये कर दो आप यहाँ कर दो फिर ये वाला हटा लो, ये उसका करने की कोई बात नहीं, ये लिख दो, सेम चीज लिख दो, ऊपर वाला मिड बैंड लिख दो, लिख दो 20 टिक लिख दो 20 टिक स्टॉप लॉस तो 30-60 पी मैक्सिमम जो फिक्स स्टॉप फॉर 36 पी 30-20 mid band is okay. आप सिंपल ट्राई करके देख लो कि कैसे लग रहा है आपको, कंफर्ट हो रहा है अगर ऊपर तो आपका बटन कर लो जस्ट को ऐसे स्टार्ट किया मैंने दे दूंगा अभी मैंने स्टॉप कर दिया मैं हारी गया लोगों तो हार गया। हारी गया लोगों तो 11-21 में चाहिए इसका ये रन स्कोर बहुत ज्यादा बना दिया। संडे के दिन राशन में संडे का ऊपर आ रहे इग्नोर को कर दिया हाँ जी हाँ जी, राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो। 30-20 mid band worked, no issues. हाँ जी, रिमूव। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम तो सेव कर एक बार सेव कर लो क्लोज करेंगे तो सर। उसने 2 पॉइंट मुझे क्लियरली दिखाए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 पॉइंट पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो 0 कर दें, ये तो कर देना एटलीस्ट कि अपना उठाएं स्टॉप लॉस तो 2 पॉइंट पे 1.12 पे। So it's inside the Fibonacci boxes. Let's see. This is a retrace, by the way. Meaning swing की retrace आई ना। Fibonacci boxes worked, gave you a point. हर एक ट्रेड के अंदर स्कैल्पिंग पड़ी हुई है, सिर्फ आपको वेट करना है राइट सेटअप का। हो गया, हो चुका है सर। अभी नहीं बाय लगाना, अभी नहीं बाय लगाना, कोई बाय नहीं बनता अभी। हाँ, जब वो ग्रीन बॉक्स आए, मिड बैंड तो नहीं बनता था।
नहीं नहीं फिबोनाची में ग्रीन लिया ना, ग्रीन में पैसे बनाए ना, नहीं ग्रीन 30 again 1510 has a higher low guys, 1510 has a higher low. Let's see. Pretty strong S1 S2 यार. So let's see 57 50 25 57 50 25 plus 4.75 मैं बताता हूँ 57 55 सब मैं गलत पढ़ रहा हूँ sorry I'm reading 57 90 25 हो गया जी चार्ट टेक्स्ट डन अगेन ब्यूटीफुल सेटअप बनता है पहला हायर लो इज योर क्लू टू एंटर हो गया जी 4 टेक्स्ट वहां से आ गए कोई बात नहीं मैं मुझे हायर लो लग जाए ना हायर लो लग जाए तो पहले ही स्टॉप ऑर्डर लगा के रखे नाउ इट शुड 4 टेक्स्ट फिर मिल गए हर ब्लैक कैंडल नहीं लेनी ये अब जाएगी जी ऊपर ऑल द वे लेट्स सी इफ इट मेक्स एन एक्सटेंशन लेट इट ब्रेक 5802 if it breaks 5802 it will make an extension of previous swing. Let's see mid-band. 5802 is my number to make it an extension. 5802 is my extension. क्या प्यारा ट्रेड बना है. Fibonacci boxes worked again. So I retrace from the red box. सात ऑन आ रही है आपके पास. नहीं वो तो एक्सटेंशन के लिए सिर्फ नंबर दिया है कि वो पिछले की एक्सटेंशन होगी कि नहीं. मिड बैंड चल गया जी. अब हायर हाई से आ रही है तो मिड बैंड चल गया. सो फॉर मिड बैंड का रूल ये है कि दोनों ग्रीन है हायर हाई से आ रही है तो बाय में रखें. इतनी स्पीड से आजकल ये काम हो रहा है कि so hard to keep up with the entries. नहीं उसने 3 पॉइंट दिखाए थे आपको 2 पॉइंट. अच्छा ठीक है. So now it should go and hopefully break 5802 previous. Let's see. If there is no retrace, maybe it will come down. No extension. And make a trend to the downside. Let's see. Still, we're not sure. Black candle to the downside. So it did give you 4 ticks to the downside too. So that setup दोबारा दिखा देता हूँ नीचे आने वाला. Higher high, higher low, right? My first lower high was my indication I will go down. Because I was thinking if it doesn't break this, there is no extension. यहाँ से enter होना था ना sell में. तो sell का trade भी अच्छा बना. Higher high, higher lows, black candle to the downside.
सेटअप्स का वेट करें जब अभी सेल्स पे बढ़ रहा है ना। नहीं हो गया सर, लोअर हाई से ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड बन गई, खत्म हो गई वो लॉटरी। वो हाँ वो देखें, हायर हाई लोअर हायर लो, लोअर हाई आपके पास पहला सिग्नल था कि मैंने नीचे जाना है, एक्सटेंशन नहीं ना आई। ठीक है, एलएच के बाद हाँ एलएच के बाद वो ब्लैक कैंडल बनी, कितनी स्पीड से नीचे हो, पहला लो हर हाई बन जाए हाई लो के बाद। ये आपका है कि भाई सो एक ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड है, एक ब्लैक कैंडल टू द अप साइड है। अब मिड बैंड्स की तरफ आ जाएं, एसआरईस खत्म हो तो मिड बैंड की तरफ आ जाएं, वापस जाना है फिबोनाची की तरफ आ जाएं। बिटवीन दीज थ्री लाइक इवन विद 2 और 3 माइक्रोस आपके साथ ट्रेड बन रहे हैं। एंट्रीज लेते रहें प्लीज प्लीज, डोंट जस्ट सिट, सिम में ही लेते रहें, डोंट जस्ट सिट एंड think after the fact that I should have, would have, could have, right? So computer, so for practice, computer is saying 5790 sell from here. That's a mid-band trade. मैं अभी भी lower high, low expected low पे बैठा हूँ for my order. Let's see. Oh yeah, mid-band touch नहीं हुआ. Back into S2 because Nasdaq is back into S2. Middle of S2, S1 Nasdaq. If it breaks 5770, I think then it's heading towards your 5760 expected low. Because so far today's low has been 5770. हाँ जी, अगर ये मिड बैंड होता कितना प्यारा। Divergence and mid-band almost missed by a tick. If Nasdaq goes to S2, I think we'll hit expected low again. Divergence passed, trend changed. Beautiful. So in 3020, I need a higher low. Yeah. Let's see if the Fibonacci box has a. नहीं रेड वाले बहुत बड़े, ये रेड देखे ना, रेड के अंदर आई, रेड के अंदर से आके आपको ये दें, 1 पॉइंट तो मिल गया है, 2 पॉइंट हो गए आपके। हाँ नहीं हमेशा मैं टॉप का रिस्क लेता हूँ, और उससे ऊपर निकल जाए 1 पॉइंट में बाहर निकल रहा हूँ।
तो फिबोनाची में 2 पॉइंट प्रॉफिट 1 पॉइंट स्टॉप लॉस एक बिकॉज क्योंकि अगर वो फिब तोड़ गई है तो वो फिर वो निकल गया तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चार्ट टिक नहीं आर टिक्स प्रॉफिट चार्ट टिक्स स्टॉप लॉस so I need a higher low in 30-20 to be able to go up. Five 779 क्या वैलिड है So this retrace has been only 83% of previous move. Divergence. S1 बहुत strong resistance. वहीं पर खड़ी हुई है. So right now for area trade, I'm waiting for R1 or S3. That's it. There's no other trade. And S3, the number I've decided is 57.57. It's S3, it's value area. And my stop loss would be 57.50 minus 5 points. That's where I am taking maximum ability to take a stop loss. So 5 points because the lower number is 57.50, right? So 57.50, so 57.45 is my stop loss. हाँ हाँ लेकिन मैं एंटर भी तो अगर मैं 50 का वेट करता हूँ फिर 5 पॉइंट है अगर मैं 70 पे एंटर कर जाता हूँ सॉरी 60 पे तो 15 पॉइंट है So computer has predicted that from 57.50 to 57.60 I should bounce up like today. But my favorite number happens to be right now value area bottom. That is falling inside expected low. Another mid-band is okay. So mid-band only has these rules. Price must be coming from higher high and background color on both charts is the same.
आपके दोनों मिड बैंड जो फेल हुए ना 30-20 में, एक S1 से बाउंस हो रहा था और एक S2 से वापस जा रहा था, दोनों एरिया वाले के अंदर गिरे। Double divergence, oh my god, like 1 and 2 and 3. Let's see if, and trend will change now. This mid band may be risky on 1510. Yep, you see these white lines? That is telling you don't take that mid band, please. We have a first higher low, guys, on 3020. We have a first higher low. First higher low on 3020. 5788 50 plus 8.5. $578825. Let's see if it goes to S2. Fibonacci boxes. So Fib boxes are at 3020. The green is at sitting at 5784. हाँ ग्रीन का बिल जितना लो हो सकता है और एक पॉइंट के बाद बाहर आ जाए कि यार 4 ticks maximum stop loss. So Fibonacci, that's it. Let's see if it respects Fibonacci in this retracement. 1 second. There you go. We're inside. 5783. 1 second. 1 second. 83. No. So the head stop loss. We're back in S2 again. What is happening? We still have a higher low after a lower high. So let's see if this black candle to the upside. If it makes a lower low, then nothing. It means we have an extension to the downside. And we have a double bottom now. So that trade to the upside is gone. We are not taking that. So itna sa hai. Some users will take double bottom because it's not a true lower low. There you go. We have a lower low now. That SRE trade is no longer valid. सर ये वाली कैंडल अभी 11 बजे वाली खुली है डाउन साइड, मुझे लगता है शायद ये एक्सपेक्टेड लो पे ले जाएं आज, because this 11 o'clock candle is pushing down. Nasdaq is stuck at 350 for a long time. Buying to the upside. So lower low, lower high, and then higher low. That's your cue that I should go up. Higher high, higher low, lower high. That's your swing retrace extension to the downside. There you go. Let's see if it fills the value area one more time, the value area study. That number really needs to break 5770 before we see anything. नहीं बल्कि बहुत स्मूथ चल रही है सर. As per the fundamentals, no issues whatsoever. किस चीज का? मुझे slightly over 1510. Nasdaq needs to go down more to S2 before it makes a expected low.
ऊपर जाने लगे तो लग गया ये नहीं ये तो सही बात है सही निकल गया बस ये सही बात है ये निकल गया हाँ हाँ आने दे वहाँ आने दे फुल एक्सपेक्टेड मुझे 5770 से नीचे चाहिए क्योंकि ये टूट नहीं रहा ये सर एफटीएमओ का आपका नंबर मैं देता हूँ ये है 1440 का नीचे वाला चार्ट एक सेकंड वहां से लॉन्ग बनेगा जी लेकिन नहीं 1440 को पहले देख लूं मैं क्या नंबर बनता है सर वो बनता है 5744 चल गया जी मिड बैंड आपका पूरे हैं मैंने बता दूं सिर्फ 1510 का मिड बैंड came down and gave you 2 points because price is coming from lower low. Large triggers are starting to slightly open. Let's see. If Nasdaq went to expected low, we still have 100 points from S2 to expected low. न्यूज़ थी पूरी S2 को टच करके भाग गया There you go. 1510 has a first higher low, guys. Let's see. Will it go and break the 5775? 5777. 5781. हायर लो से आ रही है ये मिड बैंड हायर लो से आ रहा है ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड कि 1510 में हायर लो तो दिखा रहा है but not yet all right number changed ठीक है अभी भी यार ये शायद इसको तोड़ जाए अभी 81 पे कैंडल बनेगी 81 पे कैंडल बनी 2 टिक दे दिए हो गया जी आपका ट्रेड डन नहीं 81 से एंटर करना था 82 से बाहर हो जाना था 4 टिक्स ले लिए अभी ऊपर जाएगी जानी चाहिए इसको फुल थ्रॉटल से हो गया जी 1.5 पॉइंट मिल गया 81 से 8250 ग्रीन है लार्ज ट्रिगर्स लेट्स सी अब अगर ब्लैक कैंडल बन गई तो आपने निकल जाना है नहीं अब टू जरा एटलीस्ट एक पॉइंट पे स्टॉप अपना ब्रेक इवन पे कर लेना हाँ
Yes, boss. दिखता है नहीं नहीं नहीं। मैं पूछना चाहिए जो क्यों अकाउंट है पेड अकाउंट क्यों क्लोज होना था 750 हाँ एक पढ़ लिया। कर दिया नहीं नहीं केड़ा एक तो 750 वाला था अकाउंट है 750 वाला है। समथिंग दैट गेट्स पेड आउट एवरी डे नहीं नहीं फिर टेक प्रॉफिट लो वो सस्ता है। एक लेकिन एग्जाम है उधर एग्जाम सारे आंदा ही है कोई ऐसा नहीं है जड़ा 750 ਦਾ ਜਿਹੜਾ लेकिन पीए ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ नहीं वो पीए तो शुरू कर देने लेकिन वो पहले 3000 बनाना है। oh that's fine हाँ देन यू कैन डू इट। yeah no ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ वो कर नहीं सकते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ हाँ उस तो उत्ते जो बढ़ाओगे ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ हाँ and then बिल doesn't matter how much you make every day every day you can make as much and लेकिन above 3000 ਤੁਹਾਡਾ है सर। ठीक है no other rules other than नो रूल्स है ना मैं एक्सप्लेन कर देना 10 पहले तो 10 दिन ट्रेड करनी but that's fine that's okay ਸੈਕੰਡ 5 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਜਾਂ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। saving है ਹਾਂ चल नो प्रॉब्लम पता करते हैं एक्सप्लेन लेटर है हाँ नो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स 5771 please come down to 577025 can you break that? Price is at expected low. Almost. All right, we are now officially below the previous lows, 5768. हाँ मेरा एरिया आ रहा है जी 5757 है और एक्सपेक्टेड लो शुरू हो रहा है 5760 से। Again, we are in expected low, very fast and sharp. 5756 मैंने 57 पे रखा हुआ जी आप 60 ले लें जहां से ले लें। ये बॉटम ऑफ द नहीं जो एक्सपेक्टेड लोग हैं जी नहीं आप देख लें 60 से बाउंस हो गया वो हो गया मेरे को मिल गया 1 पॉइंट 2 पॉइंट मेरा ऑर्डर नहीं पिक मेरा मुझे नहीं ऑर्डर पिक हुआ अभी मेरा 5757 पे लगा हुआ है वैल्यू एरिया पे। पर एक्सपेक्टेड लो इज डन फॉर द डे 5757 देखें आती है कि नहीं वैल्यू एरिया के अंदर। Don't do that to me. Come on, don't do that. No trade. Area works. 60 worked. 60 जिसने 60 लिया 50 लाइन ले लिया even 50 825 से चलेगी जी। Oh my God, it's okay. Area trade is done. Expected low is done. कितने में डाला सर आपने जब मैं 57 पे खड़ा था नहीं गया वहां पर 5625 नहीं 5825 मुझे नहीं आया 58 है अभी दोबारा आ रहा है हाँ देखें क्या पता है वैल्यू एरिया को टच कर ही जाए because Nasdaq is in S2 again. मैं तो माइक्रो में कर रहा हूँ हो गया जी I don't think it will come down. I missed that trade. Let's see if it touches mid-band now and comes down. But area trade is done. Counter against the so computer predicted 60 to 50. If you entered 60, you made money. 59, you made money. 58, 50, you made money. But unlike me, I didn't get in because I was sitting at 57. So that kind of waited for no reason all day.
Some users I know did jump in. वो जब जा रही थी ना कि देखेंगे चलिए, तो but एरिया हमारा 100% expected हो गया। दूसरा भी Nasdaq का भी चला हुआ है। अच्छा नैस्डैक का दोबारा था, वो दूसरी अटेम्प्ट थी इसलिए मैंने नहीं लिया। नहीं वो हायर पे लगा था पिछली बार, इस बार लोअर पे लगा। अच्छा लोअर बैंड 250 से आ रहा है। 250 251 पे लगा के आया हूँ। ओके ओके ओके, सो लोअर लो से, सो नैस्डैक के आपके आ गए। आई गॉट इट। 50 पॉइंट ऊपर भाग गई एक बार में पड़ा। उफ उफ उफ। एक्सपेक्टेड लो आज से टच हो गया। हम Nasdaq का लगाएंगे अच्छा एक्सपेक्टेड लो। अभी नहीं बनता क्योंकि ये हर है के बाद अच्छा बनी है। अभी ये रिस्क Area trade, beautiful trade from expected low, but it's okay. अब यहाँ हायर लो दे देना मुझे, फिर मेरे लिए काम सही है। ये देखें पहला हाँ, वो आ गया 30 20 15 10 में पहला हायर लो आ गया। लेकिन मिड बैंड का 15 10 का हायर लो तो आ गया। वैल्यू एरिया से एक टिक रह गया, नहीं नीचे वाला। मैं 57 पे खड़ा था, वो 58 25 से चला है। बाय हो चुका है, एरिया भी खत्म हो गया ना एक्सपेक्टेड लो। 57.99 से आई थिंक आपने लिया? नहीं मैंने तो Nasdaq लिया। अच्छा ठीक है, आपने नैस्डैक का S2 ले लिया होगा। ठीक है, क्योंकि वो 50 पे टच होके गई है। एरिया मिडल लगे और इस लॉक इन माय प्रॉफिट आई एम डन। अब यहाँ से ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड मिल जाए मुझे 5766 75 प्लस 4.75, नहीं और नीचे आ गई। अगर ये 30-20 पे ब्लैक हायर लो दे देना तो वो जरा मुझे ज्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड लो है ना, तो यहाँ से इसको शूट अप करना चाहिए। फाइव 550 प्लस 4.75 5770 आ गया जी, नीचे हायर लो लगना शुरू हो गया जी। 6350 63 5763 प्लस 4.75, क्योंकि दोनों के सेम हो गए ना, दोनों के नंबर सेम हो गए। 67 वहां से ब्लैक कैंडल बनेगी जी। नहीं अगर आपने 30-20 की, लेकिन मेरे नंबर दोनों सेम हो गए ना, तो फिर मैं ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड 15-10 के क्यों ना लूं, वो तो जल्दी आ जाएगी। हाँ तो एटलीस्ट 4 टिक से तो लेना शुरू करूं। हाँ मिड बैंड आप सही कह रहे हो। हाँ अगर मिड बैंड 5763 प्लस 4.75, either 1510 is 5767.75 and let's see which one. मैं 1510 के ले रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, it's fine, no problem. नहीं वो तो आपको वो करवाएंगे ना, वो GFF करवा देंगे। नहीं करेक्ट फ्रॉम हियर जस्ट द अकाउंट साइज। हाँ वो ब्लैक कैंडल फेल हुई मेरी, मैंने थर्ड, आप सही कह रहे थे मिड बैंड पे खड़ी है ना। हाँ वहीं पर अब मैंने लिया, लेकिन आप 30-20 के ब्लैक कैंडल का वेट करें, लेट्स सी
क्योंकि उसने ब्लैक कैंडल बनाई और नीचे आ गई क्योंकि वहां मिड बैंड खड़ा था. Let's see, but it's okay. All I need is Nasdaq to push a few points up or because just made 4.75 and went down again. This 62.75. इसमें आप लोअर दिया जाता है 5750 sorry 5750 एरिया का नीचे वाला हाँ वो वैलिड रहता है. So it just only made barely black candle and then shot to the downside. क्या कर रहे हो? Seeing it extension किसमें बन गया? तो निकल गया. यहाँ पे 4.75 पर जा रहा है, वो सेल जा रहा है. इस कैंडल के अनुसार है ना. So it's testing expected low one more time. Now we are in the true value area one more. I think it just shot up. इसके नीचे वाला थोड़ा सा डाइसी है ना. नहीं एरियाज हैं, it should be okay यार. अभी तो वो ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड बनाने की कोशिश कर रहा है 30-20. बना लिया जी, बना लिया 8.75. अब यहाँ से वही वाला काम हुआ. 8.75 बनाता ही. Well, let's see, it's not end of the stop loss yet. I'm still in a trade. Let's see. No, still doesn't like it. Same thing it did on 4.75. Still, I'm not giving up. The moment it made the black candle, it just kind of. I think it still should shoot up because we have a higher low after a lower high. So as per the theory, I think we're still okay. Four ticks तो देना चाहिए इसको. There you go. We are done. My trade is done. 8.75. 3 ticks दिए हैं उसने अभी तक. एक टिक और दे दे तो मेरा ATM पूरा हो जाएगा. सही फाइट हो रही है. 8.75 9.5 से आ गया. ये अभी तक उसने नहीं. ब्लैक कैंडल तो बनाई है लेकिन this Nasdaq is still into the S2 zone. नहीं जाने. उसने 3 टिक्स दिखाए हैं, चौथा टिक्स अभी दिखाया नहीं है.
Come on, it's bottom of the bar. थर्टी ट्वेंटी की स्ट्रेंथ ऊपर है, 310 की आज नीचे से क्या कर रहे हैं मेटा मोटा कहाँ पे हैं सर वो तो बहुत नहीं है, मेटा तो काफी नीचे है. There you go. We are still in. I'm still in the same trade. हो गया जी मेरा ट्रेड पूरा उसने black candle. All right, so that was a little bit of a test because you have to keep that trade until the next black candle. But it was a successful trade as per it's doing the theory 100%. 2 point लिया मैंने 1 रखा था. मैंने 2 पे टिकट करी. हाँ क्योंकि मैंने जो पिछला स्टॉप हाँ ठीक है ये थ्योरी चलती है जी. अब कुछ लोग क्या करते हैं मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं. कुछ लोग यहाँ ब्लैक कैंडल के बाद बॉटम ऑफ द बार बाय करेंगे. लाइक जिस तरह वो आई ना बॉटम ऑफ द बार से वहां आपका स्टॉप लॉस बहुत कम है. आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 4 टिक्स का है. लेकिन जनरली वो ब्लैक कैंडल अब देखें some users will enter here at this level. So after higher low, it will go to black because what we are hoping is the black candle will continue to the upside and go. But some users will wait until the black candle actually. Sorry, I gotta get this. So it's there. You already have it. It's all set up. One more time testing expected low because Nasdaq is at S2 and ES is at expected low. Maybe it likes the 57.57. I don't know. Now the area would be the lower band, guys, 50. मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रही है ये एक्सपेक्टेड थर्ड अटेम्प्ट है एरिया को टेस्ट करने की एक्सपेक्टेड लो 1 2 नहीं मैं नीचे आ गया और वहां उसको ना दिक्कत हो रही है और नीचे जाने क्योंकि एक्सपेक्टेड लो है आज का सर एक्सपेक्टेड लो से उसको थोड़ी सी मैंने अभी नहीं लॉन्ग जाना जब तक मुझे ब्लैक कैंडल टू हायर लो नहीं मिलेगा मीनिंग के लोअर हाई हायर लो देन आई विल गो अप जस्ट लाइक द प्रीवियस ब्लैक कैंडल so it only gave us 8.75 you got 2 points I got a point out of that सर Nasdaq बंदे भर रही है इस वक्त which way if Nasdaq pushes down ES is going down if Nasdaq goes to 20,000 but let's see which way Nasdaq wants to go time will tell at 12 o'clock candle or 11:30 2 minutes to go to the next half an hour candle
and 30 minutes to go into the 4-hour candle. So the 240 chart will get updated after 30 minutes. हाँ पहला LH आ गया. Let's see. थर्ड अटेम्प्ट भी एरिया की. ये डीबी तो फिर नहीं है मेरा ये वाला काम. डीबी तो वो I have to double check if double top bottom is same as a higher low. One more time. Now it's consolidation. 5 up, 5 down, 10. So it's consolidating in this area. अभी यहाँ स्टॉप लॉस है तो नहीं भाई ना अभी तो ऊपर जाके नीचे आ गया अभी ये उड़ा देंगे. जब तक मेरे पास हायर लो नहीं है मैं नहीं जा रहा लॉन्ग के ट्रेड में. 1510 में तो हायर लो आ गया है. आप ट्राई कर लो ना सिंपल प्रैक्टिस करके देखिए एक आइडिया होगा समझ लीजिए कि जा रहा है. But Nasdaq has no mood of going up right now from S2. 30 minutes time will tell. $277, $250. I'll request my first payout on Bullnox. Let's see how that goes. Because I'm done $28,038 after the. है? नहीं मुझे लगता है 2600 है. मैंने ये इनका पढ़ना है कि बुलनॉक्स में क्या है. राउंड 1 तो 3000 था. जो राउंड 2 है वो मेरा ख्याल है 2660 है या 2700 है. मुझे ख्याल है 1500 देंगे या 2000. Let's see. But I have to trade 8 days. I think today is my 7th day. Or 3020 has a higher low now. 3020 में higher low आ गया है ना. 5771. नहीं लेकिन वो पिछले से हायर है. डबल टॉप नहीं बनाएगा क्योंकि पिछला है 71 है ना. तो 71 अब 71 हो गया. अब डबल टॉप बना देगा. ब्लैक कैंडल डबल टॉप पे बन रही है. Now a problem is that right now the black candle is not appearing. 5761.50 now. 5761.50 plus 8.5. 5770. Price is in complete consolidation for ES and Nasdaq both. Okay, no more. It number changed again. It made another. Let's see if it makes another double bottom. हो गया, lower low बन गया. So we are not going up. All right, we are in the area again. This time in the true 57 area.
it actually did touch the value area to the dot here. So 57 to 58, it actually gave us some points. Expected low win. Because Nasdaq is pushing down below S2. Fibonacci boxes on 1510 are there at 57. Yep. So anybody who took a 57 value area trade is made 4 points too. So this is the theory of the value area, and mid-band worked as well. On 1510, it touched mid-band and came down because price was coming from a lower low. अभी और नीचे जाना चाहती है लगता है. But Nasdaq is pulling back up, so वो आपने कम मार्केट फास्ट चलता है ना, फायदा तो होता है लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस है नहीं तो वो थोड़ा फास्ट चलती है चलो तो सीधे सर बड़ा रिलीज करो अपनी तरफ से रिलीज करो ना रिलीज करो 750 एक सेकंड मैंने एक सेकंड कौन सा ट्रेड सॉरी हाँ 50 पे जाएगा तो वहां देखेंगे ना, अभी तो गया ही नहीं तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया.
भाई मेरा 8,000 का लॉस था, ये नहीं पकड़ेंगे ना। मैं 1300 का लॉस कर रहा हूँ। मेरा 8,000 का लॉस था। इसको ड्रॉडाउन कितना पहले 10,000 डॉक्टर भाई sitting almost $7,000 negative on Nifty and S&P. तो आपको लेकिन अभी करंट में माइनस नहीं या तो अब आपका रीसेट हो जाएगा ना 2 लाख वाला। तो 193 है। हाँ तो what is my threshold? 180 13,000 पड़ा है आपके पास। 13,000 हाँ उधर जाके लिखा होगा मैक्स लॉसिंग लिमिट, एफटीएमओ की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो एक्सपेक्टेड लो तो लगा यही, अब देखें और नीचे कितना जाना है। और कितना गिरेगी? Now we have a first higher low again after a lower high. Let's see. Now I would like to go up. Five seven 50 plus 4.7 5762 25. No, still wants to go low. अब लोअर लो बना लिया, so might try. Let's see. Because came from a lower low, mid-band worked. आ रही है जी 50 की तरफ फिर। हेलो सर, क्या चल रहा है? ठीक ठाक? हाँ जी मैं कर एब्सोल्युटली नो हैं। मैं 50 तो यार रीजनेबल लगता है, लेकिन वो उधर नैस्डैक अगर एक्सपेक्टेड लो में आ गई ना 20,000 पे, तो फिर इसने नीचे निकल जाना है बहुत। नैस्डैक 232 पे है पिछला। डाउन है।
नहीं, अभी नहीं, अभी तो डाइवर्जेंस के बाद फिर मिड बैंड सही पास होके नीचे आया है। अभी तो नैस्डैक का कोई मूड नहीं ऊपर जाने का। बहुत स्पीड से चलती है जल्दी तो बहुत मैं उसको हाथ में लगाऊं आप ही ओए जाएगा। ओए 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 ये तो नो वाली है आखिरी टिक ओए ओए एरिया करते हैं वो ये कौन से लोगों ने राजनीति करते हैं लोग तो कुछ खा ही रहे हैं उधर थोड़े से आ रहे हैं कुछ चल रही है और नीचे और आगे जी। Up again, consolidation in there. Now we are hitting the bottom range of expected low, guys. ये लोग चक्कर लगा भी गए हैं। तो मेरा 50 था ये उनकी टेंशन होगी। इतना नहीं 50-75 से आ गए अब किस 50 पे, क्योंकि मैंने पता है कि इस दफा चलती गाड़ी में बैठ गया। मैं क्या यार 100 तो निकाले ना, 4 पॉइंट्स हैं। हाँ हाँ सर, 4 क्या, क्योंकि इतनी लॉस है तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगी ना। But our expected low bottom range is not. Fibonacci ना लोग के उसको otherwise ठीक है Fibonacci boxes are 30-20 पे Fibonacci काटता है वो थोड़ा ध्यान रखना Fibonacci कटा हुआ है नीचे ही आएगा 57-61 Fibonacci के नीचे देखा नीचे ही आएगा
Gap trade averse. Gap trade. ये किस्मत खराब है No, match is not selling के लग तीन सौ चार तक खेच गए लेकिन बुलंद हो रही है सीधी कारगर बहुत और यार सेंचुरी बन जानी है चलो उसने ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक 98 से कम दो report. All right, do we have a higher low yet? We do on ES. अब फिर हायर लो एक बनाया, लेट्स सी. हो गए घर पे हो बाहर सर अगर बाय किया हो तो सेल आस्क करना चाहिए कि सेल बेच सर कभी भी मार्केट ना दबाएं, कभी भी ES में buy ask दबाएं and sell ask दबाएं, because then it will put a limit order, not a market order, right? So buy ask, sell ask. So never hit market, because market would just mean whatever price. Buy ask is like I want to ask at this where everybody's asking. So that's so at least it will put a limit order for you and not give you a tick difference. So whenever a situation is like this, I never use buy ask. I mean buy ask and sell ask. If you never buy market, sell market. No, sell ask. Huh? No. If you're not sure where to put an enter and you want to just run behind the price, hit buy ask, sell ask. Don't hit buy market, sell market. The reason is it gives you a limit order. Buy ask and sell ask both are limit orders. They're not market orders. Market orders will just give you anything price possible, right? So you don't want to have a market order. See, I'm about to take 2 buy long right now, 2 longs. So of 2 micro MES, right? But I did buy ask. So either you put a limit order, so test it on sim. That means buy ask. Let's see which way if it wants to. Now there's a higher low inside. ऐसे ऑर्डर लगा रखा है वो नहीं हिट कर रहा तो फटाफट बाय आस्क कर दें हाँ जी अब मैंने और निकलना हो तो सेल आस्क कर दें. तो रेदर देन वो लिमिट ऑर्डर लगाएगा ना और इस एग्जैक्ट प्राइस पे निकालेगा आपको. तो सिम पे टेस्ट करें. बाय आस्क क्या करता है, एक टिक बिलो लगा देता है और एक टिक अबव लगा देता है. अगर एक टिक ही होता हाँ, नहीं तो एक पॉइंट कई दफा 4 टिक खा जाता है यार. तो आई नेवर हिट. So I'm waiting for a black candle to the upside now. 575150 plus 8.5. Let's see if it wants me to take me upside. Jay, आपने request किया है. So let's see. I have to make 53,600. Black candles got formed right now. Fourth candle, 8.75. And take it up now. Don't. And push to the upside. Come on. I'm inside that black candle right now. 8.7, 9.7, and one more tick.
Sorry, bas push ho done. 4 ticks are done. So the moment you have a higher low, that's your cue that I'm going up. You actually got 2 points out of this. 10.75. SRES. It's still going up. Now I will take every mid-band going up. Every mid-band. If you took this black candle and you're trailing, congratulations. Remember, it went as high as pivot points. So now we are done the down rally, hopefully. How many times it tested? 1, 2, 3, 4, 5 times. 5 times S3 got tested today. And now we took that black candle to the upside, and it gave us actually 5 points, but because 8.75 was the actual number, and then you can take your. सर अब तो ठीक जा रहा है, दोनों हायर हाइज हैं, दोनों ग्रीन हैं, अब मिड बैंड सही जाना चाहिए ना, क्योंकि अब the trend has, now I don't see a problem in this mid band of 1510 first, and they're kind of falling in the same range. नहीं एरिया हो चुका है. यार मिस हो गया मेरा. Let's see. एक सेकंड दीजिएगा भाईजान. ब्यूटीफुल मिड बैंड ट्रेड डन है. मैंने वहीं पर बाय आस्था बात दिया था ना, जब वो आया दूसरी दफा तो सेल आस्क. एग्जैक्टली बट आपका मिड बैंड बिल्कुल सेफ था. बोथ आर हायर हाई लार्ज ट्रिगर है. हाँ exactly. So now there you go, mid band is going up. So you wait for the right setup and your mid bands will not fail. If you look at this again, you have a lower low. Let me change it to the board. You have a lower low, you have a lower high, you have a higher low telling I'm not going down, I don't have an extension. Swing, retrace, no extension. Swing, retrace, extension. And it gave you black candle to the upside. I made a higher high. I have a black mid band here. I'm going up. So एक और mid band आ रहा है, देखें, क्योंकि 30-20 अभी green चल रहा है. वो भी mid band touch करके ऊपर चला गया. So everything is coming from higher high. My trend is up. Done. Trail. It's finished. Game over. Missed or not missed, I don't know. Whatever you guys took, it's done. कुछ लिया लॉन्ग जी? अब दो देखें स्पीड, वो अब हर मिड बैंड चलना शुरू हो गया जी. 12 बजे कैंडल बंद हुई है. It's gone. अब ये एकदम क्या 12 बजे किसने बोलना शुरू किया यार? Oh, I think I know what happened. Right now, London session just closed. Because remember, at 12 o'clock, you have 6 p.m. ahead. The European session is closing now. So whatever the volatility was, it just started. So London session is just closed now. Is it, what time is in London? I think that's the only thing I can see. What time in London? 4:58 p.m. So they close at 5 o'clock. So their time is... So they have huge volatility. Sir, speed देखें, वो कल वाली आ गई है speed. One good mid band can change your direction to the positive. You know, that black candle went up to 36 points. There's a divergence on 30-20 now. Divergence की line थी, so not take that mid band.
Too much volatility again. Sir? Market data? Yeah, activate exchange. Activate exchange, activate exchange, activate exchange. जैसे ये एक्सपेक्टेड लो से आ रही है हाँ जी। S1 में थोड़ा सा बनता है नहीं यार R1 जो आज की न्यूज भी ठीक थी, तो R1 पे देखेंगे। एरिया में S1 नहीं ले रहा यार, क्योंकि 12 बजे की कैंडल खुली है, यूरोप बंद हुआ है। क्योंकि अब नैस्डैक का R2 प्लीज, नैस्डैक R2 प्लीज, नॉट R1। वैसे आपका S1 वो चल गया, 3 पॉइंट दे गया। हमने लिया था नहीं, मैं सोच रहा था, मैं यही बात कर रहा था आपसे, आप हाँ कहते तो मैं ले लेना था। लेकिन ये मिड बैंड आ गया ना, ये वाला 1510 mid band was okay. Just don't chase it. If you didn't put it on a mid band, 3020 mid band now. T20 का मैंने कहा ये तो वो ठीक ही वो निकल के 2 अभी स्विंग रिट्रेस हो रही है, so S3 to S1. Let's see Fibonacci boxes. सर एक तो S1 वर्क किया आपका ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड बनी है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई के बाद ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड कितनी प्यारी बनी। 1510 का सेटअप देखें, हायर हाई हायर लो, ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड, डाइवर्जेंस। यस but your Fibonacci box has worked.
Let's see, wants to go to S2 or back to R1? Nasdaq is pushing up. कैनेडियन भेजे ना मेरा निंजा काम का हट गया सी हाँ जी हाँ जी अच्छा यूजर नेम एंड पासवर्ड हाँ जी हाँ जी अपना एपेक्स का पानी मैंने एनी डेस्क दे दियो एनी डेस्क पे डबल हाँ जी 1039 875 ओके जी एक्सेप्ट करेंगे S2 बहुत स्ट्रांग हो गया जी हो चुका है सर होके चला गया अभी तो इतनी कंसोलिडेशन हो रही है कि समझ नहीं आ रही किस साइड पे जाना नहीं कुछ भी नहीं बंद होती है ना 5 बजे तो वो थोड़ी सी रैली उस वक्त आती है हो गया जी Strong consolidation.
क्रूड है वो वहाँ जा रहा है स्ट्रीम लो पोर्टलैंड में छोड़ गया दूसरे में जा रहा है। क्या लगता है established system है वो जो कम होना है जब कम नहीं होना है उसको पूरा सिस्टम छोड़ सेम रूल आता है लेजेंड में बीए में कितने में लाने 450 600 a day टोटल नहीं $2,000 $2,000
जी जी सर, मैं दस दिन, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आ गया तो वापस कमीने अगर तेरे फोन करो तो फोन 5 मिनट हो गए उसमें था, 5 मिनट हो गए तेरे कल क्या सर भाई कल 5 मिनट हो गए। कैसा है? मैं तो बढ़िया ही। ठीक है, हाँ मेरा लल्ला आ गया। तेरे हो गए तो कर रहा हूँ मैं बैठा हूँ, मैं एक्टिंग में कर रहा हूँ। चल कर यूज करनी हो गया। वो यार हो जाएगा काम, मैं तो फोटो भेज दूंगा। फिर लोग का बराबर तब दोबारा 50 रीजन में 7 दिन के बाद जो होता है ये खत्म तो नहीं होता। 30 दिन है आपके पास, 7 तो नहीं है। 30, जब तक 30 नहीं खत्म, आपका लेजेंड ठीक है, आपने उसको 30 फौरन तो नहीं फिनिश करना। तो 7 तो 7 दिन तक तो हम लोग को 1500 बना नहीं 7, देखिए आप हमें डे 1 से आप ये 7 दिन के चक्कर में पता नहीं क्यों फंस गए हैं कि मैंने 7 दिन में करना है, 7 दिन में करना है। 7 दिन में नहीं करना है वो 7 से पहले नहीं करना। हाँ। तो बस दैट्स इट। 1500 नहीं करना, 7 दिन करना, वही था ना। हाँ, तो आप नहीं, आप कर सकते हो। 450 से ज्यादा नहीं जाना। मैं आपको लिखा, मैं अभी इनको दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, फंडेड कंपनी आपको भी दोबारा, क्योंकि आप वो ना 7 दिन के अंदर पता नहीं आके फंस गए हो। मुझे लगा 1500 के अंदर नहीं नहीं, बनाना। क्यों, कौन, किसने कहा नहीं बनाना? उससे पहले नहीं बनाना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, सो 50927 minus 48636, 2291 minus पुराने नहीं देना माया कि नहीं है, नहीं वो भी देगा। ओके। तो आप लगता है पुराने स्टूडेंट्स हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जब कहते जब अपना फंड करता था, हाँ हाँ, बेसिकली जो प्लेटफॉर्म था अंदर, इसकी पूरी फैमिली को मैं जानता अच्छा, हूँ। ये आखिरी बंदा है जिसको मैं जानता okay, no problem. हूँ। 12 साल, Okay, 13 साल। very nice, very nice. So we'll explain it in. Is it okay if I do it in English? Some users online listening, worldwide. So let me give you a backstory first, so it'll make sense. Why did we introduce this? So I joined Win Lifetime here approximately 4 years ago. I heard about it, right? I joined, became a student, and then back then, just like you guys, if possible, sorry, mic में आपकी audio जा रही है, sorry. So I joined just like you guys. I got Ninja 7. I was excited. I got into futures trading. Here's the problem though. With Ninja 7 and original funds, you were very scared of trading, futures especially, and you don't know. SIM is okay. Every 2 weeks, we got a new SIM account and then back to 7. And so I opened up an office after coming here and I bought like 20 units and I had stations like this and a lot of guys got involved with it.
Biggest issue was a new trader comes on board into future, has no idea what they're doing. They're gambling, buy, sell, buy, sell. Some days goes okay, some days goes bad. So Ninja 8 came, and that was a major milestone for everybody. So GFF and Ninja split because they were first doing it, free keys and so on. Ninja 8 came, and Ninja 8 brought along with it so many APIs for us to work with it. So a lot of companies around 2.5 years ago started. Biggest one in the industry is Apex. Then you have Bullnox, Legends. So GFF now has their own company, Legends. So the way it works is, so the company is called Legends, and they want to test you first before they give you capital. So any funded company, the word is funded, meaning you are getting funded by somebody else, a third party. They want to hire you as a contractor, as a trader of futures market. Right now, there's more than 15 companies that we know of. They are very good. They pay daily. So it's just an explosion because they said, I have some capital. Can anybody manage it? And you're like, all right, I can manage it. So, but before they manage, they started something called an evaluation first to make sure you are a good trader. You are not, you're not emotional, right? Because emotion problem is trading is not a good combination. It's like water and electricity don't mix. You have emotions and trading don't mix well. You will have problems. So right now, if you went, you are on March, let's say 5th today. So you decide that I want to test myself. First of all, you need Ninja 8. It will not work on 7. So you need to upgrade to a new version, which Daniel can do it for you. Number 2, you will spend today, I think it's around $50. I'll write $50 US. They'll give you a capital. So the way this system gets open, they'll put a fictitious amount of money called $25,000, and they'll put $1,500 worth of stop loss in there. So this has no value whatsoever, right? Both of these have no values. However, all they want to see is, I don't care which method, which market, they will have 6 conditions for you. They don't care. ES, Nasdaq, MNQ, MES, they don't care. All they care about, can you turn $25,000 amount into this? This actually has no value whatsoever. If it goes below, you lose. But they have given you $1,500 worth of capital just to see. You can pay more. You can pay probably $80, get a bit of. So they range. So you can get, they range from 50 to like 750. And then you have different companies giving you different type of capital. So the best ones for beginners is the $50. Right now it's on sale for $33. This is how you get started. They have 6 conditions for you. Number 1, make $1,500. Number 2, don't lose $1,500. That's the second condition. So this number cannot go to 0. That's negative 1,500. This number has to go to 1,500 plus. That's it. So this number is irrelevant except you just tracking your progress. Hey, where's my target? Number 3, they want you to trade for anywhere from 7 days minimum. I will write 7 days plus. What does that mean? They don't want you to finish the target in a day or 2 or 3 or 4. They're testing you, so they want you to see you trade for at least 7 days. The person beside you was confused. What does 7 days mean? But you are given a month. So until April 3rd, you're given this window. So you have 30 days to trade, calendar days. So total you have 30 days. Out of 30, if you made $100 a day, you're done in 15. If you made 200 a day, you're done in 7. Right, so that's how. But they don't want you to make less than 7. Meaning, if you're done, why I will come to this? They put a limit order for you. They said no more than 450 a day. So they gave you this limit. So if you're making more than 450, they will raise your target.
they'll raise your target. So if you make more, so a lot of people make 200, 300, 200, they're done, right? So the goal is, because if you made 450 today, 450 tomorrow, 450 the next day, and another 450, you're done practically. But then you're not done this 7-day exam. So yes. Yes, yeah, absolutely. So these 7 days are like, I'm thinking like you're talking about like a 1 week or like a 7, like a 1 Any day. 7 days, working days, 7 trading days. So like, Right. technically speaking, like, you know, like No, a Friday, Saturday, right? Sunday counts as a Monday. Okay. So remember. So coming back to you. Today you bought an account, March 3rd. April 3rd, March 5th, April 4th, they will charge you again. So how many days? You have 30 days. Okay, you have 30 days. However, you cannot complete this test before 7. That's all they're asking you. But So this is the first time only, not every month that's going to happen. no, It's because only after this day, they will move you into a different round. This is called the evaluation round. Then they go into a round called performance or master. So there are 2 rounds to getting money. So round 1 is this. So if you made 450 first day, you came, okay, let's try exactly like this. This time I will make boxes. It will make it easier for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So today is Wednesday. Today you bought the account, you didn't trade. Okay. Thursday comes, you make $200. Your trading day got counted. So you now Friday you don't trade. It's okay, not a problem. Then you trade Monday again. That's day number 2. So 7 means that 7 trading days. You cannot finish before. You can do this in 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 30. If you traded every day $100 plus, it will take you 15 days, right? So that's more than 7. But if you traded 450 today. What is 450 today? Plus 450. Plus 450. Plus, you're technically done. 4, 4, 4, 12, 16, 17. But done ho gaya na? But remember, you only traded 4 days. They don't accept this. Yes, you can make a single day 450, but not every day. But if I am consistently making 450 a day for the next 7 days, You're fine. You're fine. But my recommendation is, if you are doing like this, that's 4 days. But day 5th, make $50. Day 6, make $100. You don't get any more value than 1,500, right? You have already passed. right? You have passed this condition. Only condition you are still within here, but only condition you haven't met is the number of days are not there. Yes. So I know that you might go into the, let's say for example, on the day number 1, I made 450. Correct. But on the day number 2, I lost $100. Yes. So let's do it properly. So this is how it starts. So we'll do it properly by example. So day 1, you managed to make 450. Okay. They will give you maximum capital of 1,500. They don't give you any more capital, by the way. Okay. So day 1, you started with 15 positive, 15 negative, 1 to 1, right? Now, what has happened here on day 1? Today was Wednesday. All right. So it got counted. You got your trading day in. Day number 2, you say I lost, let's say, $200. $200. No problem. You only had 1,500, so they will deduct $200 for you. So any money you made, it doesn't get added if you are at the maximum. This is counted because you traded. The second day got counted. Day 3. Now these are not consecutive. Give me a number. Day 3, let's say I made $100. $100. All right. Remember, you were down, so they gave you money back in. Remember, from $1,500 on day 1, you made 450. They didn't give you anything more because that's the maximum they will give you. Day number 2, you lost 200. So you lost 200 from your threshold. So you're down to $1,300 available. Day number 3, you made $100. Because you can go maximum to 1,500, they added that $100 for you. So
that becomes 1400. That becomes the, now you have ability to lose 1400. Now day 4. Therefore, let's say I make $500. Okay. First of all, you haven't broken any hard rule, but here's the thing. You made $500, right? But how much distance is in 1500? Only $100. So they only gave you 100 here. Not getting the point. Like why they are two separate charts. Yes, that's why I say watch this. Forget about this. This is just for tracking your number. This is to tracking your drawdown. So you will follow 2 numbers every time. So now here's the thing. All right, one thing is lose money. There's sometimes it's good, like just this morning, somebody's trading an account and they were supposed to make $1,500. They made $1,800. I said, wait. So what will happen if you don't lose money? They will raise your target. Now your target becomes $1,650. So this goes from $26,500 to $26,666. So as you make money, because they say, all right, if this person wants to make more money, we're going to give them higher target. So what happens is you manage to do this. I normally tell everybody, log into your account, lose $50. So bring it within that bracket, because this is extra work for nothing. It's not like they're going to pass you faster. So you bring it down to 450. So do not exceed more than 400. Yeah, because it's not worth it. Because you just end up raising your target. It's like the harder you work, they want you to work more. Okay, so let's say like in the day number 4, I made only $300. Okay, that's fine. So let's do day number. So here's day number 3 was 100. Day number 4 was 450. Let's say 300. All right, 300. Remember, they're not gonna give you any more money. You already are at the max $1,500. So they give you 0 to making, right? Remember, this is max drawdown. They don't exceed more than that. So if you made 450 today, it's not like tomorrow you can lose 1950. Remember that. You can only lose 1,500 from the highest, which comes to the Daniel's point. Your principal becomes whatever you start today. So if I made $200, tomorrow your principal is higher. 1,500. Yes, exactly. So now day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, 2 more days. Now, where are we up to in terms of math? 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 minus 2, 11. So now you only have to make $400 and you can lose 1,500, right? How you see how the scale has gone into your favor? Now you have a lot of ability to lose and you only have to make. So you kind of go balanced step by step. This is how the funded So work. for example, like at the day number 4, like day number 6, I make $600. Your target is Don't good. do 600. Yeah. Go max at 450. Yes, correct. Do max. Because technically speaking, it's better to make less than $1,500 Yes. in first 7 days. No, it's not a 7-day thing. 7-day means just don't pass 7 before. days, sorry. Yeah, don't pass before it. Meaning don't pass by 1500. yes, don't finish 1,500 before it. Okay. You can get to a close. Like take your time. What they want you to see is this person's behavior for minimum 7 days. So we have to be steady. That's all they're looking for. That's why they're going to fund you, right? So they're looking to, well, I'll tell you now, a person in GFF 7 days or AMP, if you wanted to open a $1,500 account, it will cost you $1,500, right? And that's how the real money works, right? Yeah. So this is how much it's costing you, $30 or $50. Like it's less than 3% or 2% of the money that you're putting in. So that's how funded companies work. Now, one of 2 things will happen. Either you will fail, either you will pass, or you will do a rollover. It's such a small account, you should either fail or pass. That's what I recommend. So again, I didn't write the 5th condition yet. Make sure your trades are closed by 4:30 p.m. sharp. No exceptions. You can reopen your trade by, again, it's 6 p.m., no problem. 6 p.m., right? So you have to make sure. So 1 condition, 2, 3, 4, 5 conditions are there. Yes. We talked about minimum 7 days. Yes.
for passing this test, right? 30 days. Okay, so between 7 to 30 days. 7 to 30, correct. God bless. 7 to 30 days is you. So a person who trades for $100 a day, it will take them 15 days. Right. A person who trades 150 a day will take them 10 days. A person who trades 300 a day, it will take them. Now here's the best part. It will in 7 days you will make 2,100. So there is no reason to work crazy. You know, some people say I can make 250 a day. No problem. It's okay. My recommendation is $200 to $300 is a good trade. You can open as many accounts. You can open 20 accounts. And then keep feeding. All right, I'm done this one target. I'll take. If you have a habit of over trading, don't trade the same account. Move your capital into a different account. You can open multiple accounts. They allow you up to 10 accounts in the performance. So this is stage one. So what will happen is either you will fail, meaning how would you fail? You lost $1,500. You didn't close your trade by 4:30. These are the only two ways you can fail. Either you failed by losing $1,500, or you kept your trade open, and he kept the trade open, I think, 4:59, and then they closed and liquidated the account. So time is very critical. It's so these are the two ways you can lose money. Yes. Let's say, for example, two questions. Yes. Number one, if we do not pass the test, Correct. so we have to redo the test all over again? Yes, Or so- you're done? No, you can take your test 1,000 times. They don't care. But 1,000 times 50 is $50,000. To gain 1,500, not worth it. You want to pass your test, maybe 2 or 3 tries. You want to get to the next level. Because remember, you're aiming for how much they're going to pay you. You're getting that 1,500 limit, you have to pay $50, right? So there's no reason for 15,000 times, it doesn't make sense. Yeah, so you have to keep it within a health. We are using funded companies to teach you how to trade. On the same time, you're learning stop losses and buy stops and sell stops. But So you're saying that the demo account that we used to work on earlier, Yes. that demo account is no more. this one still has a demo inside it. There's 2 options. You can trade the funded account, or you can trade the demo account. There's a simulation account given to you for free, part of it. Right, so this is basically, now if you fail, you cancel, go and cancel, so they don't charge you a $50 again, because you go into a subscription model, and then buy another one 5 minutes later. That's easy, just put a token in, you got another capital of 1,500. So, but you don't want to be gambling here. Whole idea of funded companies to teach you how to kind of in and out of trading. And then, and Kind some, of keeping it back on you. Yes. How so a lot of people in Ninja 7 went from demo to live. And then if you lost $1,000, you're like, I'm not touching it. This, right? That's exactly right. So because 1,000 is a real 1,000, right? With this, you have an opportunity to learn. Like I'll teach you 9 ways to take a trade. There's a swing retrace extension method. There's an area method. There is a midband method. There's a divergence method, Fibonacci method. First, we get your entries right. What is a buy limit? What is a sell limit? What is a stop buy? What is a sell stop, right? So we get your entries right. After that, because majority will say, I'm doing great in simulation. You know why? They're holding their losses until they can recover it. That's not trading, right? Trading has a SL, TP, and then that's how every trade must open with a stop loss. We have a pledge we take every day. Not a single trade will go without a stop loss. You can move it, adjust it, but you got to open a trade with a stop loss, meaning, hey, I'm taking an area trade. Computer said today, I'll give you a live example. Computer says 57.60 to 57.50 is the expected low. And he said in the morning, we have to go low to high, meaning price bounced here. First time it bounced from 60. Second time it bounced from 57. Third time it bounced from, I think, down to 52 or something. I didn't check the exact number, but you have to know a stop loss, that at what point I'm not going to lose my account, right? So that's so trading with discipline. Now, if you have a good trading happen, majority people will pass an EA with a breeze. I know my entries, I know my stop losses, I know how much target, how much loss.
Because what will happen is, why do the stage do 7 days? 6 out of 7 days, if you have a habit of not putting a stop loss, there's a 7th day, market will test you. Like there's not all the rosy days. Maybe you get lucky and you are not putting a stop loss, and all 7 days are good. And the 8th day, and you have to have a day maybe that where you take a loss of, let's say, $350, and you're like, this is not working out today for me. I took this trade, it's not working. So have a maximum ability that, hey, I will come back tomorrow. Because if you're going 3 minus 300, minus 400, minus 500, minus 900, an account is gone, right? So my goal to teach you is trading, not gambling. That's what we are here for. So if you pass, congratulations, they will move you into round 2. Round 2 is the good part. Any money you make is yours. Any money you make in round 2 is actually yours. However, they changed the condition slightly because they now have to put real capital. So conditions change this way. Number 1, account size. Number 2, amount. Number 3, number 4. So few conditions change. So everything else stays the same. However, now your target becomes $2,000. All right. So round 2 is called the performance account. They're going to charge you $150. So they are saying risk 10%. So your risk is $150. Their risk is $1,350. So it's 90-10 ratio. Remember, evaluation doesn't cost them anything. It's fake money. So your risk was 3%. Their risk was 0 because they don't have to pay or lose anything. Round 2, your risk is 10%. Their risk is $1,350. 90% is their risk. Now this is real game. You're in something. Now the best part is, so in order to make some money, they say make $2,000. They will ask you to make $2,000 before they pay you. Number 2, don't lose $1,500. So it's slightly not in your favor, 1-to-1. Slightly has gone down by $500. Number 3, there's no time limit anymore. So that's a favor they're giving you. They don't care how long you take to make. There's no monthly fee. There's nothing. It's just you have an account. That's it. So number 3, there's no time limit. However, they ask you, please don't do this in prior to 10 days. Meaning that don't finish the target before 10 days. Remember in the first round, 7 days. So in the second round, they say don't finish the target before 10 days. Yep. So I'm a little bit confused here. What do you mean by target in the second round? 27,000. Before they pay you, you have a target, right? Oh, okay, so to make 27,000. Yeah, so turn 25,000 into 27,000. There's a target. And do not Lose more than 1,500. Correct. So it got it shifted slightly, but they give you unlimited time. They said no, you don't have to do this in 30 or 40 or 50. Some users make $100 a day, 150 a day. This is also not before 10 days, right? No, not before 10 days. Correct. So no more. You cannot make $2,000 before 10 days. That's all they're saying. So that 30-day limit is gone. 30 days limit is gone. Infinite limit is there. But 7 days turn into 10 days. So instead of 730, it's become 1050. Correct. And then there's the daily limit changes to $600 a day. So they raise that slightly now. So they give you $600 a day. So let's put in some trades in the real account. You got your money. And of course, there's a 7th limit. These 10 days, you have to make at least 150 minimum in those days. Meaning that if you have a day, let's put some true trading examples. Today is day number 1. Well, how would you like to start your day? Now you are in the performance account or professional account, and now you have given them 10%, 150. They have opened up in a new account, and this is a real account. Tell me a number for this. So Day number 1. Let's say $50. $50. Okay.
They're not going to give you any more threshold. You're at already 50 maximum, right? Yes. I'm going to make $5 here. Your trading day does not count. Also, it doesn't count as day number No, one. no, because you have to. What counts is 150. Anything above 150 counts. You made $50. Yes, they gave you $50. Your target went down by $50, right? However, that doesn't count as a trading day. Because in order to see you that you're a good trader, they want to see 150 minimum. Okay, so let's be real. Let's say when day number one we made $50. Yes. Day number two, let's say we made $200. All right, great. They're not going to give you any more money because you already at max. $200. Your day one got counted. Because it's exactly 7, 8, 9, 10. This is day number 2. But you have, out of 27,000, you have already made 250. Like out of $2,000, you have made 250. There are days, so where I made $50 and I just couldn't find an entry anymore. It's okay. It's not something that I must trade. It's okay. No problem. Let's say day number three, I lost some money. How much? $100 minus 100. Doesn't get counted as a trading day because you didn't make 150. But that gets deducted from that. That, of course. So, of course, you have your target went down a little bit and then your threshold went down to 1,400. So it's a constant battle between threshold and your target. Constant battle because you start with some numbers and then you go up and down. But there's a website called Tradeovate that we give you. It gives you a live ledger, what these values mean. Forget about what this means. This just means I want to get from this point to that point. This is the true how much ability to lose you have. That's 1,500. So let's say day number four, we made $500. 500, perfect, no problem. Lucky day, area trade, 500. Day number, and remember, they are not consecutive. Yes. There's no time limit of 30 days or 50 days. You can take as long as you want. The days some users I know don't trade until price goes into expected low. They don't trade because they know that they will take a full lot from expected low. Because $1,500 is a lot, right? But from expected low, you can still make a couple of $100, no problem. But remember, only 100. Because that was the only remaining thing. Let's say day number three. Today we are up More to, than $600. so that's now 1, 2, 3, 4 days. You're at 4 days. So let's say the next day we lost another $500. Okay, no problem. -5. That's your day 5. Day number 6, because we don't want to go over $600. Yes. So let's say we made $600. Okay, no problem. You know why I wrote 500? Because you're max. Go over $1,500. Exactly. But here's the good thing. Here's the benefit is when you cross the $1,500 of target in the round 2, then it gets added. So when you eventually cross, you end up making 1,500. Any money that you make after gets added to your account. Okay. But first 1,500 doesn't get added. After that, it does get added. Until $2,000. Until forever. You can keep this account going forever. So technically speaking, like, let's say for example, on the left side ledger, right? Okay. So We're just assuming that we have already made 27. let's do this. This crosses each other out, right? So this will make it 100. So we'll just do a math this way easier. So far you are at 600, 700, 750. So we at 26, 750. Yeah, so you gotta get to 27,000. And then day 6, maybe day 14, I don't care. But maybe day 14 comes along and then you minute. So I managed to do this in 14 days, in a month. So 14 days I got to, and then I got my payout. So when you get to $27,000, what would be your threshold? 2,000, because it's adding, right? You can now qualify to get the money from them.
So whatever I make on top of that. After No, that, anything. They will give you $1,500 out of that account. Oh, but my threshold will go down To 500, correct. Because you are at 2,000 threshold and your threshold goes down to 500 and your withdrawal is $1,500. So it's better to keep at least $1,500 there. And It's short. up to you. Some people take 500 out, some take 1,500 out, some take 1,000 out. It's up to you how much. Some people can grow back from 500 again. It's ability to make money from 500 to another 15. No, not a problem. How I did it, I took 25,000. I turned into 28,000. I made 3,000. Out of 3,000, I asked for 1,500 because I wanted to make sure my threshold doesn't have that issue of adding, blowing, adding. So I made 3,000. I requested 1,500. Once I requested 15, I still had $1,500 actually, and then that's it. Actually, I made $3,300. I requested 1,500, and I had $1,800 in my account, and then you can do the math. And I recorded all my videos on how to withdraw, how to take rise, buys. Everything is online. So now I'm about to record. That 4:30 p.m. Yes, that changes. So this is round number. Correct. And then you can open a trade at 6 p.m. again. And again, if you made more than $600, it's okay. One day of No. You know why? Because I had a goal in mind. I wanted to get to 3,000, right? So I took 3,000, and then I'm like, I can make up to $900 max. Because remember, if your target is only 27,000, then you can get only $600. But if your target is like, I wanted to not withdraw the money until 28,000. So I kept my target to $900 a day. So it depends on you set your own targets. Okay. So, but technically speaking, okay, and all this money that we're talking about, that's in Canadian also? US dollars, yes. Money going out is US, money coming back is US. Like today, there is a company, Bullnox, that we are all trading. Sir, आपको पता है बुलनॉक्स में कितना बनाना है ट्रिप दोबारा राउंड 2 में? राउंड 2 2500 बनाना 2000 बस नहीं यार, बट मैं 3,000 बना दिया लेकिन मेरे ख्याल है मेरे डे पूरे नहीं हुए. मेरा ख्याल है आज 7वां दिन है शायद. हाँ 5 trades यस $200. यार और क्या चाहिए यार, हो जाता है. So micros is pretty powerful too. So whether you do micros, minis, NQES, crude oil, I will give you the top 3 strategies. And trust me, that work. Number 1 is area. Area, you guys been watching Daniel for a long time. You know how areas are. That with areas are support and resistance number. How good is your trading? Believe me, I lost quite a bit of money. No. But my question is, were you randomly entering? Yes. Okay, then it's not really the software fault. If you're like, when you started with me, when I joined the company and became a partner, quite a few things I changed. Every person has to, since last 3 days, I started this. You will get up and you will say this to yourself. If you're doing a pledge to yourself that you're not here for gambling. Like, so let me clear the board a little. Because these are the biggest mistakes every trader has. And I said, even though he's been repeating it for 18 years, but nobody listens to it, right? So all you have to do is check the news. Is there news coming at what time? Today, I was saying countdown. Hey, guys, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. And if you were in a trade, that becomes a gamble, right? You don't know if it's going up or down. I will always put my stop loss. There is not a trade, because sometimes you will say, hey, I had my stop loss. It's okay. It's little burn, but you don't cut your arm, right? It's a bit of a pain. You have to follow a strategy. You're not just telling me, hey, I'm thinking price is going up. That will override. I will do what I see, not what I think. So you're thinking price is going up, but you're seeing it's red. So don't think and watch, mix it. And all I did was, he reads these notes every day for 18 years. I will do and trade. I'll stay disciplined. I'll put my trade today as my first day. These are the only 6 rules to follow. And honestly, there is no, and I'll show you my accounts. Go on TikTok, go on YouTube.
account after, whether it's FTMO, whether it's Bullnox, Apex, Legends, Perdia, I post all my results. And I go with discipline. Like, FTT, we managed to make $35,000 in less than 2 months, right? So there are lots of opportunities with lots of funded companies. If you don't know how to take an entry first, none of this matters, by the way. So, because personally speaking, like I'll speak for myself only. Okay. I want to forget everything what we did. Okay, that's fine. So your steps are, come back with Ninja 8. Let's open up a funded account with it, and you practice for first 7 days on simulation. I want you to show me, do you understand what a mid-band is? Do you know what a divergence line is? Do you know what a value area is? Like today, like Vikram Bhai did a great job every morning. He writes night session highs and lows. He's one of our certified mentors, meaning he has done EAs, PAs, payouts, everything. So, and he can teach you the top 3 strategies. What is an area? What is a value area? What is a black candle? SRES. These are good enough to, and he just said, I made $200 in micros, right? If you can do this, it's not that. So come back with Ninja 7. We'll open it up. Let's refresh it because Daniel has new lectures. Instead of you waiting 4 weekends, everything is recorded online. Start with lecture 1. If you can spare 5 hours, 2 times 5, 10 hours. There's 10 hours of lectures on superareas.com. I want you to watch. Okay. I know because it will refresh your memory that what you have been doing. And because it's a long thing. Lose kar lene? Wale. बड़ी मुश्किल लूज करवाया मैं उन की कराया. नहीं देखो ना बनाना मुश्किल है लूज करना और मुश्किल. 1000 लूज करवा नहीं लेकिन 1792 में बनाई थी ना. नहीं 2500 इसमें लेकिन मैं बड़ी 1200 हो गया 1270 हो गया. ठीक है. So he is doing a funded account. He has passed today, but he overshot. You know, a runway plane. Why do they have a runway plane? If you overshoot, you still crash. So you gotta take off and land in a certain limits, right? So, and congratulations, he's done his pro accounts on take profit. Mubarak ho ji. 3 days. 3 days, but here's the problem. He's done 3 days, but they ask him 5 days. So the company he picked gives you a daily payout. Okay. Slightly different rules, but similar idea. Well, I want you to go through this first. This will put in your discipline. So let's take it like a First step first, get Ninja 7. Maybe sit down with Vikram Bhai for an hour. He'll give you the... It's okay. It's okay. Watch those 5 videos, and he does a tremendous job. A lot of people with Vikram as a mentorship has taken a lot of Majid Bhai. We have like 13 certified mentors who can teach you with holding the finger what is a buy stop, what is a sell stop. But there's never too late, because today you're the youngest version of yourself, right? Tomorrow you'll be one day older and older. So you got to start it somewhere, right? And this is a serious business. I wrote it. These are the pledge you get up. आप भी करते हैं मेरे साथ pledge morning में. मैं यहाँ से live ahead लेता हूँ हर किसी का. मैं आपकी extension हूँ. Exactly. So मैं काम करना घर जाकर ना बच्चों की माँ से पूछ लेना चाय कैसे बनाएं. इन्होंने मेरे से बेट लगाई थी. मैंने कहा इतने अरसे बाद आ रहे हैं आप 7 से 8 आपको मैं चाय पिलाऊंगा अगर जो है ना. लेकिन अभी सर 5 दिन नहीं हुए. सही है. तुम्हारे के 2 मतलब है. शादी के तो जिसने पहली दफा चाय पिया वो भी तुम्हारा. आपने सही पूरी बात कही. तो एनीवे अभी आपके 2 दिन रहते हैं तो अभी चाय कि 2 दिन में कुछ भी हो सकता है. हाँ जी. नहीं मुझे दिखा यहाँ से मैं आ जाता हूँ. हाँ यहाँ से ब्लैक कैंडल से. नहीं बड़े नहीं होते ये. इनको डबल क्लिक करके विड्थ बड़ी कर सकते हैं. इधर राइट आए नीचे आए तो आप ब्लू नीचे आए. ये हर लाइन को आप उसको बड़ा कर सकते हैं. ये लिखा है मैजिक बैंड्स. टी बैंड्स नहीं, मैजिक बैंड. ये मैजिक बैंड्स. तो यहाँ पर आपने जिस कलर को बड़ा करना है, जैसे रेड को ब्लू को बड़ा करना है, ये वाले, तो इसको 5 कर दें. देखें अब ये 5 हो गई. मोटी होगी ना लाइन, तो आप एक लाइन पे जाके मैजिक बैंड पे उसको बड़ा कर सकते हैं.
क्वेश्चन। हाँ जी ये तो था हायर लो, लाइक लोअर हाई के बाद। हाँ ये जी तो पीछे वाला हायर लो था। हाँ, तो आपने यहाँ से ब्लैक नहीं कैंडल नहीं टू नहीं, द तो ब्लैक कैंडल का बनता तब भी था। हाँ हाँ बिल्कुल उसके पीछे वाला नहीं देखना, लोअर लो। नहीं नहीं लोअर लो ठीक है नहीं था, ब्लैक कैंडल higher में हायर हाई हायर लो पहला लोअर हाई आ गया ना हाँ, तो आ हमें गया। उसने बताया कि यहाँ से हमें तो ये ब्लैक कैंडल टू द डाउन साइड लेनी है ना अच्छा अच्छा हाँ वैसे बोल। एग्जैक्ट जैसे ये कहा ना हाँ जी इस पेज पे गया हाँ तो ये इसका कलर ब्राउन सा है। हाँ जी एग्जैक्टली ये मैजिक बैंड क्लिक किया और एक एक के कलर्स पे आप उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं अच्छा ये इसको हाँ जी सो दीज आर द तो राणा भाई तो मतलब बट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेड टू निंजा। Ninja 8 make sure your laptop is at least 16 gigs of RAM with a iCore 7 then you're okay नहीं वो तो कोई प्रॉब्लम उस नहीं पे है। निंजा 7 तो ऑलरेडी डाउनलोड हाँ नहीं नहीं वो उसकी कोई परवाह नहीं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। यस 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 ठीक है अच्छा ये जो हमको जो फंड जो करना है ये $30 या $50 जो भी हमें फंड करना है राइट। सॉरी जो आपने बताया था कि स्टेप नंबर $30 हमें या $30-50 जो भी होगा फंड करना है हमारे को दैट विल बी फंडेड अगेन सेम थिंग लाइक यूएस no yeah US fund by credit card not through a like wire or anything ओके चलिए ये भी चेंज हो गया पहले हमको बाय करना पड़ता था ना। yes ओके ठीक है ओके so basically in short what I'm getting it chances of losing money in this account is a little bit less. no it's 100% same the idea is the pain is less if you opened a $1,500 account and you went and traded without a method the pain you will feel कंबल लेके सो जाएंगे आप कहोगे 1500 यहाँ आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि यार मैंने देखना है कैसे चलना है क्योंकि एक नए यूजर्स को 3 माह लग जाते हैं मैं आपके कहूँगा यार मुझे बता दें डाइवर्जेंस लाइन क्या है आप कहोगे यार मैंने पढ़ा था भूल गया हूँ तो एक न्यू यूजर्स को ये देखें ना मैं अब आपको पूछूं सिर्फ कि यहाँ मुझे डाइवर्जेंस की लाइन बता दें एक सेकंड जी आपने भी बोला ना कुछ भी याद नहीं है। नहीं एग्जैक्टली यहाँ पर एक डाइवर्जेंस की लाइन जा रही है वो है वाइट लाइन एक वाइट लाइन जा रही है बीबीस के अंदर से वो वाइट लाइन राइट दैट मीन्स अब प्राइस ने चेंज हो जाना है तो 9 मेथड है 9 मेथड सबसे पावरफुल एरिया उसके बाद आता है मिड बैंड उसके बाद आता है ब्लैक कैंडल तो जिस तरह मैंने कहा बहुत नीचे है आप एरिया पे फोकस करें मैं आपको एरिया करवाता हूँ साथ बैठ के उंगली पकड़ के आज सुबह एक्सपेक्टेड लो आई मैंने कहा भाई यहाँ से लॉन्ग कर दो तो नॉट ओनली कि मैं आपको यानी कि सिखाऊंगा साथ उंगली पकड़ के ट्रेड भी करवा दूंगा कोई मसला नहीं That was probably something that we were probably missing it. अलारत आप नहीं आ सकते वेदर खराब है यूएई में जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है न्यूजीलैंड में जा रहा है यहाँ से ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है व्हाट्सएप जूम पे यूट्यूब पे और आपके superareas.com पे तो अब आपका अकेला काम नहीं है अब यू नो मैं सर आना एक मिनट आप पहले ना डैनियल को देखें निंजा 7 को 8 को अपग्रेड करा लें ताकि वो आपका ना निंजा का लाइसेंस अपग्रेड कर ये वो टाइम ये देखिए बोला कि जो अपग्रेड करने के लिए फीस देनी है हमारे yeah that's the keys changing of 7 to 8 he will tell you sure आज मैं आपको no ये बंदा जो है ना मनुष्य इसकी पूरी फैमिली को मैं जिस तरह जानता हूँ सालों से सिर्फ इसी को नहीं जानता हूँ इसकी बीवी को जानता हूँ बच्चों को जानता हूँ भाई को जानता हूँ पेरेंट्स को जानता हूँ हाँ कंसर्न और चलो ठीक है कोई नहीं रिकवर हो जाएगा
और ये क्या है बुल ये तो थोड़ा मैं तो ऐसा 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 मैं बताऊंगा सारा माइक्रोवेव वो सही रहेगा सर ठीक है सर गरीब का काम कैसे सच करता है आई बस ठीक रहेगा ठीक है जी आप थैंक यू आप कब रहेंगे कल तो बैट का सीन है ना हो गया हाँ फिर कल क्रिकेट है पता है 30 होने कैसे लड़ेगी नैस्डैक के 15 रन की तरफ हाँ ये मुझे कभी गोल रन नहीं किया इसमें गोल चलता है मैं गोल नहीं करता यार चार पॉइंट $400 कल मैं माइक्रो में गोल्ड में ठीक मैं देखता हूँ ये 15 है ना 30 सर बस ठीक है कैसे चला तो ये पानी की तरफ आ गया गुड चल मैं देखता हूँ फिर It's like I can like come on this time because I do the trading morning and then. What about you? Getting there. Start trading. It's trying to go. It's not on the yes. Everything. Yes. क्या नहीं जो आई वो देता हूँ 4-5 दिन हो गए एक और नहीं एक और भी आ रहा है किसी को बार से आ रहा हूँ उन्हें जीता ही मैं सो रहा हूँ उसको तो भर देता हूँ अब तो आगे में निकाल के भर देता हूँ क्या इसमें तो कुछ नहीं लिखा ये नहीं लिखा मैं देख लेता हूँ उसको खड़ा हो जाता हूँ खड़ा होता हूँ
That's it. That's not the. But tomorrow, yeah. Yeah, but John, how do you this week is your last week? Next week you're flying there. जो आगे स्टेटमेंट आई है वो देखना पड़ेगा इसके लिए। Yes. फिर आगे जी एक्सपेक्टेड लोग फिर मुझे एक्सपेक्टेड लोग नहीं आई S1 पे आएगा। अच्छा हे बॉस हाउ आर यू बड़ी बुरी तरह नहीं थी मुझे। Yeah, come over to see the CEO is what's going on in the market? It's really bad. Where is the market right now? From S1 bounced up. So realized is 51.06 minus 48.6. आज फिर वही मिस्टेक होने लगी थी 5 माइक्रो में 5 मिनी लग गए बुलनॉक्स में लेकिन बट इट्स फाइन ऑलराइट ओके जी टेक केयर हाँ नो प्रॉब्लम वो आपके लिए डैनियल कर देंगे ना अच्छा वो नहीं करेंगे ना। हाँ सुपर एरियाज वाले नहीं कर सकते डैनियल आपके लिए कर देंगे अच्छा उनको ले आगे यस 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 नो मेरे 1547 बन गया तो वो अच्छा नहीं कब बने किस अकाउंट के ये लेजेंड लेकिन एक दिन में बनाए नहीं फिर नहीं ठीक अब आपने शाम को 6 बजे लेजेंड्स के साथ चैट करनी है तो वो आपके लिए कर देंगे नो प्रॉब्लम जी एनी टाइम स्टार्ट करना है मेरा अकाउंट खोलना है सर देखो पहले तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਸਟਿਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮ ਹੈ ਫੰਡਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ Which entries means? मीनिंग कि बाय एंड सेल आ गया हाँ नहीं जाते हाँ ओके ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 4 ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ओरिएंटेशन तो नहीं आया था ठीक है मैं थोड़ा बिजी रहा स्वाच फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं सो मैंने लगता है कि नए वीडियोस आ गए हाँ वॉच करना मेरी रिकमेंडेशन है कि नेक्स्ट क्लास ਜਿਹੜੀ है ना ओरिएंटेशन ਦੀ मंडे ਨੂੰ ठीक है
ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਵੈਂਸਡੇ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਵਾਚ ਦਾ ਬਲਕਿ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨਿੰਜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ yes and then ਥੱਲੇ ਆਓ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤੇ ਸਲਾਈਡਲੀ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ little up right here click here to so yeah click there okay अब जो नीचे आए ये तो 7 वीडियो हाँ नहीं इस तो बाद ये देखो 4 वीडियो हिंदी 4 इंग्लिश ठीक है अगर हिंदी देखनी है हिंदी देख लो ये डिफरेंट है ठीक नहीं ये तो पीडीएफ है ना ये तो पीडीएफ ये वीडियो 4 ਤੇ 4 ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਓ ਇਹ 5ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨਿੰਜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ 8.1 ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ 6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫੰਡਡ ਦੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਫੰਡਡ ਸਰ ਫੰਡਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੰਡਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਜ਼ੀਰੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲੈ ਜਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 1500 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੂਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ نو लर्न इन आउट ठीक है स्विंग क्या है रिट्रेस क्या है एक्सपेंशन क्या है मिड बैंड क्या है ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਡੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ I would say at least 15 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਡੈਮੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡਡ ਤੇ ਆਓ 15 ਫੰਡਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਐਕਸਪਰਟ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਡਾਇਵਰਜਨ ਲਾਈਨ ਦੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਟਰੈਂਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਹੈ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ then I can consider you ready not expert no expert no देखो expert का मसला नहीं है प्रैक्टिस है ना बार बार सही मारी है हायर हाई हायर लो लोअर हाई हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्लैक कैंडल कितने है स्टॉप लॉस कितने है फिर लोअर लो लोअर हाई पहला हायर लो आ गया उत्ते जा रहे हैं ये 3-4 चीज़ें ही ने एरिया मिड बैंड स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन so basically is सोचिए कि एक्टिव अर्निंग जड़ी है 3 months should be okay should be you should be after 3 months अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना couple of $100 a day is not a problem ठीक है alright so मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेकिन पूरे फोकस ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਪਲੇਜ ਲਈਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ नेक्स्ट मंडे आज हो गया सर वेडनेसडे ये जो ये वो देंगे हाँ जी फिर वो सारा हाँ वही दोबारा शुरू होगा वही करके सब कुछ आपने उनको साथ चैट करनी है शाम को 6 बजे कि ये मेरा अकाउंट है ये मैंने पास कर लिया ये मेरा ईमेल है इसको मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट भेज दें बस तो ये जो एक और अकाउंट करना है वो जो कॉपी शॉपी वो बाद में पहले एक पे आउट लेंगे एक ताकि यार कुछ पे आउट आए ना तो फिर तो बेसिकली वो पीए करने हर इंडिविजुअल अकाउंट को पास करना पड़ता है एक दफा आप एक पास कर गए पीए ले लिया फिर कॉपियर में इन्वेस्ट करेंगे फिर मल्टी अकाउंट्स इकट्ठे ट्रेड करेंगे अभी नहीं पहले पे आउट पहला क्योंकि अगर उस तरह आप चले गए तो अगर एक खराब हुआ 4 खराब होने शुरू हो जाएंगे पहले पे आउट ले लें ये सर इसमें भी एक माह में करने होते हैं 1500 नहीं उसमें कोई लिमिट नहीं है अच्छा तो 3 माह में 1500 आराम से लेकिन आपने कहा था 3000 हो फिर 1500 निकाल हाँ तो 3 माह में 3000 करके 1500 निकाल लें ठीक है तो उसके
आपके पास कॉपी वाली बात। यस यस, एंट्री सही रहे। सही, वो पैसे तभी बने कि एंट्री ठीक हो नहीं आपके हुए ना 15, आपका पीए आज हो गया तो एंट्रीज का मतलब है ठीक है। ऑनलाइन देखता रहा तो जिस तरह आज कंप्यूटर ने कहा था 60 से 50 में एक्सपेक्टेड मार्केट मूव हो जाने, 60 से हुई पहली दफा मेरा ख्याल है, नहीं नीचे आई, थोड़ी सी नीचे आई, फिर दूसरी दफा 57 पे आई वैल्यू एरिया पे, तीसरी दफा बॉटम पे आई। तो मैंने कल बुलनॉक्स का पीछे मेरा एक पीएफ उड़ गया था, कल बुलनॉक्स का मैंने लेके 50% रिकवर कर दिया। मैं कहा यार कि वो $15 के इतने सस्ते लगे हुए हैं कि इट्स अनोइंग मैन, बिकॉज $112 आपके मार्केट में पड़े ही रहते हैं हर वक्त। तो उसको मैं एटीएम से लेके चलता हूँ, यानी कि मैंने उसमें एक टिक लगाया हुआ है, 1 पॉइंट, ब्लैक कैंडल पे 1 पॉइंट लगाया हुआ। स्टॉप लॉस वही नीचे, स्टॉप लॉस 475, क्योंकि जब तक अगली ब्लैक कैंडल नहीं बनेगी बैठना है ना ट्रेड में, क्योंकि वो नीचे आके वापस 15-10 में। तो 1 पॉइंट तो मैं यार 1 पॉइंट ले रहा हूँ, फिर निकल गया, ठीक है, कुछ भी नहीं कटता। तो मैंने आज 4 दफा वो सर्कल से बाहर गया, 1 पॉइंट लिया, आ गया। सर मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ स्टार्ट हो जाना। इस सैटरडे नहीं, इस सैटरडे मैं लेने जा रहा हूँ गन का लाइसेंस। हाँ, जो ब्रैम्पटन और कैलेडन और ऑरेंजविल के हाल हो गए ना, तो आई एम गेटिंग द हंटिंग लाइसेंस रिस्ट्रिक्ट। हंटिंग तो ऑनलाइन ही है। नहीं इन पर्सन है सर, आरसीएमपी से प्रूव हो के आएगा। वो तो गन का है ना, गन का है ना, वो लेना। हंटिंग और मेरे पास दोनों है। हाँ, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ जो इन पर्सन है। इन पर्सन गन का है? आपके घर के बाहर साइन लगाए यार आप, मैंने साइन ऑर्डर किया है अमेज़न से, उस पर लिखा हुआ है कि ये हाउस होल्ड में लाइसेंस गन हथियार वाला रहता है, तो अपनी मर्जी से एंटर होगे, मेरी मर्जी से वापस जाओगे। अब तो लॉ बना दिया ना उसने जज ने। हाँ, लेकिन आप अपने सेल्फ डिफेंस में मार नहीं सकते। नहीं, लेकिन उसमें मैंने जितना पढ़ा है ना, वो ये कहते हैं कि पहला फायर आपने छत पे करना है, उसको बताने के लिए कि आ गए हो भाई तुम, मेरे पास हथियार है, आखिर वो बोले, और दूसरा बच के ना जाए। देखिए अगर आ गया चोर अंदर, अगर तो वो बच गया फिर आप अंदर जाओगे। तो क्योंकि वो बच गया है ना, सेल्फ डिफेंस। मेरे पास हैंडगन भी है, वो लास्ट डे था जिस दिन मैंने ली। अच्छा, अनरिस्ट्रिक्टेड है ना आपके पास? हाँ, बंद हो गया। मेरे को उसको लास्ट गन उसके बाद मैं दे जो है बस मेरे को। नहीं अभी फिर दोबारा खोल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं मेरा ख्याल है दोबारा खोल रहे हैं। सारों के पास होना चाहिए। फार्म पे जाके ना हम 2 रिकॉर्डिंग चलाते हैं वहाँ पे, क्या बना रखी है वो। नहीं मैंने सिर्फ डाकुओं को बाहर रखना भैया, डोंट एंटर। सर इनके घर में एक डंगर आता है, अभी तक गोली नहीं चलाई। हाँ जी, रफे, RAFAY। अच्छा, अब ये बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रो का क्या फर्क है। उन्होंने आप लोगों को फंसाने के लिए रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट था $75 का, ठीक है, उसकी फीस थी 130। हाँ, तो 175 और 130 क्या बना, 75 + 130, 205। What they said was more people are failing. Everybody fails the EA, right? Why not we collect more money? So they made the fee for EA 130 and then 105, ठीक है। अब आपको लालच आ गया और वो ये कहते हैं कि 1 माह के अंदर पास कर जाओ ना तो पीए की फीस नहीं है, बस ये कर रहे हैं। तो वो हो ये रहा है कि अब आपको अब स्ट्रेस है कि मैंने 1 मंथ में फिनिश किया, बहुत सॉरी। सो everybody is now rushing to pass। हाँ, तो अगर पास कर सकते यार 15 दिन में हर टेस्ट पास हो जाता है। सर प्रो में भी सेम था है, तो मैंने जिस 1500 मनाना है और उसके बाद जो मना आपका 90%। हाँ जी, After watching the videos of ninja simulation, so this is the one we have. Correct, 100%. Actually, I'll see you on No the problem. and we'll go from there. Best of luck. Thank you. विक्रम भाई, ये क्लास 4 होगी ना इस संडे को, ताकि नया बैच आएगा मंडे को, राइट? तो फिर इनकी ओरिएंटेशन मिसिंग है तो मंडे को डाल देंगे ना, क्योंकि क्लास 1 पे होती है।
बिल्कुल टाइम है, क्या टाइम हुआ है? 1:24 यस सर। देखें थोड़ी सी लाइट ऊपर कर देंगे, फुल कर। हाँ बस ठीक है, ये अब सर 3 मेथड, मैं दोबारा आ जाता हूँ क्योंकि सो 3 मेथड्स। एरिया ये तो पक्के हो गए ना, ये तो इसमें तो नहीं, ठीक है। मिड बैंड इनके ये भी पक्के हैं, ठीक है। सो 90% well over 70% are hit trades there. So if you took 10 trades, 7 out of 10 is good. If you took 10 trades, 9 out of 10 trades are good. Then the third one that I am truly pushing, SRES. It stands for swing retrace extension. So how does this work? You have to wait for a black candle. If you watch Daniel's lecture number 1 and scroll to 1 hour and 25 minutes, he starts his chart like this. He takes 20 minutes to do this. I did this in a minute. Lower low. भूल गया ऊपर। This is a trend to the downside. नीचे जा रहा है ना? The first higher low is my, signal that I'm about to change my trend. So this is your mid band coming down. This is how he drew it. So what I do is on my 1510, if I have a lower low, then I have a lower high. I take this one and add 4.75 to it. 1510. देखिए हर ब्लैक कैंडल 4.75 पे बनती है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये वाली जो ब्लैक कैंडल है ना, ये स्पेशल है। Why? Because I am coming after a lower high. So you would, the moment you see a higher low, you will do something called a stop buy. So let me draw it easier for you. Let's put this price. 6,000 is a price. Every time you want to, this is current white line. So we will write here white line or current price. It's moving up and down. There are 4 types of orders. If I want to buy limit, I will go here. This is called the buy limit. I want to buy below the price. So let's say, let's put in this, I like to do is my Toyota Camry price. So in the Toyota Camry, I want to buy at 6,000, below 6,000. So I will do something called buy limit. Now I want to buy this when the price has gone up, but not right now. I don't want to buy right now, but I want to buy it. So let's put a price here, 6010 and 5990. So there are 3 prices: current price, low price, high price. If I want to buy current price, by the way, you should do something called buy ask right at the market price. Like you say, you know what, I want to just end, don't hit buy marketplace. So you want to hit buy ask. So if you want to buy at the current price, you will hit buy ask. If you want to buy when the price comes to 5990, you will do something called a buy limit order.
Now, if you want to buy something in future, not right now, price is at 6,000, you're like, you know what? I want to buy after the black candle is formed. So this is called a buy stop limit. So there's 3 types of orders here. You know, at Nasdaq, I never hit market. I hit buy ask because it will give me the not a market price. It will give me the as close to the market price. Now let's come down here. Now this is your buy side. Now same thing. If I'm in sell now, so I'm in sell. Everybody clear on 3 types of orders on buy? Now price is at 6,000, magenta background. I want to sell at a mid band, so now I will do a sell limit. So I'm doing my order above the price, sell limit. If I want to sell it at the current price, I will do a sell ask. Right? And finally, if I want to sell below my future, so in future, this will call the sell stop limit. Only 6 types of orders are there technically. So, yes. In that chart, Yes. there's only one kind of a sell. I mean, there's a market sell which we don't use. Yes. But as a chart trader, I only use sells limit. There's you will always see these Yes. or these two. So either you will have a buy stop or sell limit. So when you open your Ninja, right? Okay, look at the white. Either you will see a buy stop limit or a sell limit. Okay. Remember, it's right, or a buy limit or sell stop. So right, it depends on what kind of transaction you're trying to execute. Yes. So there's 6 types of orders for you. Never ever press market order. If you want to buy at market price, just click buy ask. That I want to just go with everybody's asking, I want to ask too. I checked one more thing. Yes. I did buy ask and my trail and everything was there, not the trail. ATM. ATM was there. I did sell ask and it still let me do the order. Yeah, It yeah. didn't stop. I know, वो ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ये इस वक्त प्राइस क्या और कहाँ से उसने एंटर किया, ऑर्डर कहाँ लगाया, वो लिमिट ऑर्डर लग जाता है. क्योंकि आपने कहा था क्लोज नहीं करना, तो मैंने नहीं बाय आस्क के बाद है ना, बिल्कुल मैंने सेल आस्क बिल्कुल ठीक है. बाकी से बंद नहीं हुआ. सेल आस्क जो होता है, वो और बाय आस्क जो होता है वो एक टिक नीचे होता है, सेल आस्क एक टिक ऊपर होता है. तो अगर आपका यहाँ पे है और आप यहाँ पे क्लोज करना चाहते हो तो वो तो ऊपर चला गया. तो कई दफा उसने एक टिक ऊपर जब तक नहीं आएगा उस प्राइस पे तो क्लोज नहीं होगा. It must go to there. बाय आस्क जो है हाँ ठीक है, आपने ये आपने 6,000 पे लिया, एक टिक ऊपर है, ठीक है. बाय आस्क सेल आस्क एक टिक नीचे है. Yeah. वो नीचे आएगी तक करके ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा. ओके, प्राइस चल रही है 6,000, आपने लेना है, वो क्या करेगा, बाय आस्क दबाएंगी ना तो 599,975 पे ऑर्डर लगाएगा. ठीक है, एक टिक पे लगा दिया. अगर वहां प्राइस ही नहीं आई तो नहीं उठाएगा ना, उठा लिया. अब आपने गए, आपने कहा सेल आस्क, उसने ऑर्डर लगाया 6,000.25 पे. अगर वहां नहीं गई, 6,000 से ही नीचे चली गई तो फिर वो ऑर्डर खुला रह गया ना. जब तक उस प्राइस पे एक टिक ऊपर नहीं आएगी वो क्लोज नहीं होगा. But this is better than exiting at a market price, because market price could give you anything. Sometimes I've seen a difference of 2 ticks. Yeah. So the moment you hit market, it starts at negative $25. I don't like that. I said buy ask or sell ask. और एक टिक ऊपर. So अब ये है lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. First higher low, I will take this number, add 4.75, and I will do buy stop. Buy stop. Okay. Now we will flip this in the downside.
हाँ हाँ देखिए ये देखिए अब मैं इसको ड्रा करता हूँ स्विंग रिट्रेसमेंट नहीं उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं यहाँ एक प्राइस लग गई लेट्स से 6000 से स्टार्ट हुई 6010 पे चलेगी ये 10 पॉइंट की स्विंग आई ये रिट्रेस आई ठीक है लेट्स से ये मिड बैंड चल रहा है दिस इज ए रिट्रेस until so this is what higher low let's do this as a higher high it made another higher low right let's maybe it's coming from a lower low okay until here so this number 6010 I don't have an extension until there the number will be written higher lower high right so now you if imagine you have a black candle to the downside here you would take this number minus 4.75 it will do a sell order here sell stop so sell stop so whenever you have this combo higher high higher low and lower high then you're like this is my trend to go down if you have a higher lower high higher low and then the first thing you see is a higher low then you're like I am going up from here whenever 3 out of 3 things one is different the current one becomes different that's your signal that I'm about to go up Because it's not going like same thing. yeah Change direction. change direction meaning that this is called my trend is not continuing it will go in the opposite direction इसमें profit कितना लगा? सर मैं क्या करता हूँ फिर देखें 4.75 जब डाल लेता हूँ ना मैं एक 4 टिक्स ले रहा हूँ मैं 4 टिक्स ले रहा हूँ 4 टिक्स मींस 1 पॉइंट जनरली अभी तक इतना आज एक स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि नेक्स्ट ब्लैक कैंडल रिमेंबर इज फ्रॉम दिस नंबर minus 4.75 सो आपका रिस्क 237.50 है remember because if it doesn't switch to a full thing right because the worst it could do is it made a black candle and then it started to come down and made another black candle again so that's the worst case scenario ये 19 ticks का stop loss मैं 20 रख रहा हूँ stop loss 4 ticks profit I've only had this hit stop loss once today the one got exactly 4.75 and then the cable came. But generally today 30-20 did not fail today I think both times it gave us minimum 8 ticks on 30-20 you can go for 2 points but 1 point definitely comes in no problem so this is called swing retrace extension in that time I'm not watching background color please you have to understand area is against the background if you're green you will be selling if you're in red you'll be buying so that's a counter trade in the area because support and resistance number 2 if you're doing a mid band trade you're going with the trend everything is green I'm buying everything is red I'm selling third type of trade is called swing retrace extension now I'll give you one more trade to test Fibonacci boxes watch 30-20 fib boxes so the moment you are inside the retrace so you have so in that case I don't care about mid band I don't care about background color you have a swing whenever you have a black candle in the retrace 2 boxes will appear here so this will be green this will be blue highest chances to get a point out of this is from Fibonacci green box yeah so here you would put a stop loss of 1 point meaning if it goes maybe 2 points it's up to you agar box se niche nikal gayi it means ke Fibonacci retracement not working so it should so far the probability for me I have seen is more than 70% it has given me at least a point 70% नहीं क्लॉस थोड़ा 2 रख लें क्योंकि अगर वो 2 का क्योंकि कई दफा वो थोड़ी सी नीचे आती है और फिर शूट टू द अपसाइड है राइट
So same thing we're gonna do like buy stock. no. This will be by limit. Buy limit. Because you are buying below at that, because price would be is coming down here, and you're like, I'm gonna put my stop loss. I'm going to put my buy limit because I'm buying lower than the price, right? And if you're doing a Fibonacci box on the other side, it will be red and yellow, and you pick the red. Forget the yellow, and the red would be stronger That will be on the top. on the top. So this is the highest. Sometimes you will see it will go yellow and then come down, but the highest retracement is better in the red box, red and green. So that's called a Fibonacci. So I will try to do a video. I already have a video on midband. I already have a video on area. I'll try to do a video on swing retrace extension and Fibonacci boxes. No problem. So Fibonacci 30. और नहीं सर, हर मुझे अभी आपकी लिस्ट नहीं देखी। वो कहते हैं यार ये भी कर दो। मैं कर ठीक, वो आई नहीं ना इतने अच्छे से कोई वीडियो। किस दिन रात के 1 बजे जागेंगे फिर बना देंगे। हाँ नहीं वो कल। अब ये देखें, ये कितनी प्यारी स्टडी है। अब ये एक और है वैल्यू एरिया। यार आज भी ये सुबह उठ के ना ये नंबर दूर लग रहा था, ये लग रहा था कहाँ पर एक्सपेक्टेड लो है, वहां वैल्यू एरिया खड़ा है। सर वहां जाके उसने उसको टच करके प्यार से वापस आई। सो नहीं, ये हम 60 मिनट के चार्ट से लिखा हुआ है। वैल्यू एरिया 60 मिनट क्या आता है। क्रूड ऑयल, नेचुरल, एक्सेप्ट नैस्डैक, एवरीथिंग। नैस्डैक का वैल्यू एरिया की कोई सर पैर ही नहीं है। वो 1400 पॉइंट मूव होती है, हम क्या वह 1400 पॉइंट। यार मैं कहा यार किसने कल किया। नहीं, सेम थिंग की स्विंग यार। ये पागलपन नहीं है। सुबह उठो 20,600 पे है, 1 बजे प्राइस घूम रही है 20,000 पे, और 3 बजे प्राइस कूद रही है 20,765 पे। एंड आई एम लाइक मैन, और ये सारा एक दिन में हुआ है। अब 1400 पॉइंट की मूव यार, लाइक बंदा लॉन्ग करे शॉर्ट करे क्या करे, राइट। सो मैं कहा भाई ईएस में आ जाते हैं जब तक ट्रम्प है ना। नहीं ईएस चले। अभी आप आज हो गई कुछ मना हमारे खबर आ रही है। नहीं हेलो है वही है, और लिखा है सामने। नहीं मैं इस पे लगाता हूँ क्योंकि उस पे है ये। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर। It's called SRE, Fibonacci. That's a mathematical, it's a math concept called Fibonacci sequence. तो उसकी जो एक पूरी दुनिया यूज करती है। सर एक जेड़ा पिक करो ना, ਉਹਦਾ अपना स्टॉप लॉस है, ਉਹਦਾ अपना टीपीएम। देखो फिबोनाची है ना, मैंने उन्होंने किया यार 2 पॉइंट ਦਾ स्टॉप लॉस रखो, 1 पॉइंट ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ प्रॉफिट रखो, क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ $100, प्रॉफिट ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ $50। ठीक है, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਬੋਨਾची। ਜਦੋਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ 20 ਟਿਕ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਹਾਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਟ੍ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈंने ਰਾਤੀ ਲਾਇਆ 8:30 ਵਜੇ, ਹਾਇਰ ਹਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ $387 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਉਸ ਤਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਬੋਨਾची ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, नहीं वो होता ही है कि एक मैथ आती है कि 10 पॉइंट की एक स्विंग आई, फिबोनाची के नंबर्स होते हैं कि कितने % वो रिट्रेस ले सकती है। तो पहली बॉक्स बनता है आपका को 25% पे, उसकी एक रेंज होती है 25 से 38 होगी। दूसरी बनेगा वो मेरे ख्याल 68 से 75% पे, जो वो अब कुछ पूरी दुनिया से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो हम भी वो साथ आपको डब्बा दे देते हैं कि कहाँ से रिट्रेस हो सकती है। So generally we would like to do the 75% or 68% के उस बॉक्स बन जाता है
सो राइट नाउ, और ये हर स्विंग और रिट्रेस में बनता है, सॉरी हर रिट्रेस में। सो फिबोनाची का अगेन मेथड जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेस वाले यूज करते हैं। तो उसमें आपने ये नहीं देखी होंगे, कई दफा कंफ्यूजन हो जाती है, देखा फिबोनाची रहे और साथ ही बैकग्राउंड कलर देखना शुरू कर दिया, अब तो वो बंदा कहता है यार कि फिबोनाची के लिए मैंने चार्ट ही डिफरेंट खोला हुआ है, उसमें बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ। फिबोनाची के लिए डिफरेंट है, मिड बैंड के लिए डिफरेंट है, एरिया के लिए डिफरेंट है, और स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन के लिए डिफरेंट है। तो वो आपको kind of मिक्स एंड मैच करने पड़ते हैं कुछ ट्रेड्स, बट टूल सारे आपके पास। मेथड एक पिक कर लें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एरिया 30-20 का रेड, उतों ग्रीन, सब टॉप और बॉटम, क्योंकि उते एक्यूरेसी ज्यादा है सर। आज ज्यादा है, 4 बारी आया, जिन्नी 30-20 की रिट्रेसमेंट आई है ना, 4 बारी आ जाए। मेरे ख्याल 2 दफा तो विक्रम भाई ने लिया। ये है सर, वो बार बार कर करके ना आपका माइंड मसल मेमोरी बन जाएगा यार। अच्छा फिबोनाची बॉक्स आ गया, लोअर लो हायर लो, और लो जी, लोअर लो लोअर हाई, और लग गया जी सर हर चीज में। ये SRES ब्लैक कैंडल SRES। अच्छा, क्योंकि खाली ब्लैक है तो गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, मैंने सैटरडे के सेशन में बिटकॉइन पे भी निकाल दिया था। मैंने कहा ये देखें, सेटअप बनना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई हायर, यस हमेशा ये। नहीं मेरे पास फोटो है ना, आप वो निकाल लो। ये सर ये स्टडी पावर ऑफ ट्रेडिंग में, पेज नंबर 6 या 7 है। हाँ सर, पहले 2 साल ये फोटो मेरे बैकग्राउंड पे रही है, जस्ट टू काइंड ऑफ शो पीपल। नहीं देखें, ट्रेड हर तरह का ट्रेड होता है। मैं फिर भेज देता हूँ स्टेटस पे। ये फोटो है, आपको सारों को मिली हुई है, सारों। 34 ticks, ट्रू इज 34, 19 ticks and 34 tricks। तो अभी इसमें यही बता रहा है ना आपको कि मैं गया लोअर लो हायर लो, पहला हायर लो बन गया तो जानी, और दूसरी तरफ से पहला लोअर हाई बन गया तो मेरा ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो नो प्रॉब्लम जी सर। इसके साथ फिर हम इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं फंडेड कंपनी का, उसको स्टेरॉइड्स पे डाल देते हैं कॉपियर के साथ, और फिर जो है ना असल जूस निकलता है उसमें। ठीक है, आपकी एंट्रीज ठीक हो गई तो दैट्स इट, रेस्ट इज जस्ट ओवर एंड ओवर एंड ओवर। लो जी, ऑलराइट, time to shut it off for today. Enjoy जी, take care। किधर गई है जी प्राइस? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? Sir, at least market should crash at least 2 or 2%. ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ थोड़ा गोल्ड पे करते हैं, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ हाँ, लेकिन मीनिंग